Good evening, everyone. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. କୋଉ ଯାଏ ପଢିଥିଲେ ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ରିଡିଂ ସରିଥିଲା ନା ମଲିକୁଲାର ମାର୍କର ପଢୁଥିଲେ ରାଇଟ୍? Okay. So molecular markers, how it is useful in aquaculture. Okay. So these molecular markers, they're used to differentiate between the species. Okay. So we'll differentiate or we'll compare the genetic makeup of fish, and so that we can know the differences between the two fishes. Okay. So here different types of genetic markers or DNA markers are used, like based on the, you can see the classification here. It is based on the location of genome. There are two type 1, type 2. Okay, these alloenzymes and RFLP, restriction fragment length polymorphism. Then type 2 is RAPD, AFLP, SNP, microsatellite. Then method of detection is hybridization based, that is RFLP. So these are different types of markers which we can use for the uh, to know the differences between two fishes. Okay, so coming to the restriction fragment length polymorphism, that is RFLP. So here, what is the process? So we'll extract. See the diagram here in the 8.10 diagram. First, we have to isolate the DNA from the two species of fish. Okay. So first step रे हमें कौन करबा DNA isolate करबा. Okay, DNA is isolate कर, there is a protocol for DNA isolation. तो first हमें sample fish रो DNA किसी cells नेबा, से cells रो हमें DNA isolate करबा. Then we'll make the DNA into DNA fragments by using restriction enzymes. Everyone you know restriction enzymes that is used in rDNA technology, recombinant DNA technology. So these restriction enzymes, they have a specific site in the DNA where they recognize and cut the DNA, and those sites are known as palindromic site, right? You know everyone. So by use of this restriction enzyme, we can make the fragments of the DNA. Okay, see the DNA fragments. Then DNA fragments are separated by agar gel electrophoresis. So this is the gel where we can see the species X and species Y. So in the gel, we'll load the fragmented DNA of species X and species Y. Okay, so after this gel electrophoresis, we'll see the bands according to the size and mass of the DNA. तो आमे डीएनए को फ्रैगमेंट रे बनै दैछे बाय यूजिंग द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम. एबे तक आमे जेल रे जतले रन करबा आमे ताको फ्रैगमेंट हिसाब रे देखिबा, और फ्रैगमेंट गुडा हमकु केमिति सेपरेट हबो, दैट विल बी बेस्ड ऑन द साइज एंड मास. जेते डीएनए रो साइज बेसी रहिबो, सिए डीएनए रो वेल पाखरे रहि जिवो, माने जेल रो वेल पाखरे रहि जिवो. जेते छोटो रहिबो साइज, इट विल मूव अवे फ्रॉम द agarose gel. Okay, so after separating in the gel, then we'll go for the radioisotope binding, radioisotope probe binding. So there are some probes means which are water probes. So these are small fragment of the DNA which bound to a specific DNA present in the agarose gel. ଆଉ ଏବେ ଆମେ ସେ DNA probe को radio isotope द्वारा label କରିବା. Okay, so radio isotope label probes are used. So when these probes are bound to the complementary DNA in the gel रे जो DNA separate ହେଇକି ଅଛି, ତା ସହିତ probe जे complement ରେ ଥିବ ଯାଇକି ସେଠି bind ହବ. See here, radioactive radioisotope specific DNA probe.
ମ୍ୟାମ୍ ଦେନ୍ କର୍ସର ପଏଣ୍ଟ ଟିକେ ୟୁଜ କର ତ ବୁଝି ହଉନି ସେ ଫିଗର ଯୋଉ ହେଇଛି। ଏଠି କର୍ସର କେମିତି ୟୁଜ କରିବୁ ଫୋନ ଏଟା ଲାପଟପ ନୁହଁ ନା ଫୋନ। ଓକେ ସି ହିୟର ଦ ଡାଇଗ୍ରାମ ଆଇସୋଲେଟେଡ DNA ଦେଖିଲ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖା ହଉଛି ଆଇସୋଲେଟେଡ DNA। Yes, ma'am. ତୁମେ ଆଗାରୋଜେଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଫୋରେସିସ୍ ଜାଣିଛ ପଢିଛ କେବେ ଆଗରୁ ନା ନାଇଁ? ହଁ ମ୍ୟାମ୍ ପଢିଛୁ। ତ ଏଟା ଇଜିଲି ବୁଝିଯିବା କଥା। ଓକେ ସୋ ଆଇସୋଲେଟେଡ DNA ଆମେ ତାକୁ ଫ୍ରାଗମେଣ୍ଟ ବନଉଛେ ସି ଏଟା କ୍ଲିଭେଜ ବାଇ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ଏନଜାଇମ ଦେଖା ହଉଛି ଲେଖା ହେଇଛି କ୍ଲିଭେଜ ବାଇ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ। ମୋ ଲାପଟପ ଟା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ତ ମୁଁ ଫୋନରେ କର୍ସର ୟୁଜ କରିପାରୁନି। ତୁମାନେ ଯଦି ଆଗାରୋଜେଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଫୋରେସିସ୍ ପଢିଥିବ ଏଟା ବୁଝିପାରିବ ଆରାମରେ। କି DNA ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପଢିଥିବ। Yes, ma'am. କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। ହଁ ତ ଆମେ ତାକୁ କ୍ଲିଭେଜ କରିବା ତାକୁ ଆମେ ବ୍ରେକ୍ କରିବା ବାଇ ୟୁଜିଂ ଦ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ଏନଜାଇମ। ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ଏନଜାଇମ ୟୁଜ କଲା ପରେ କଣ ହବ DNA will be fragmented into various fragment। ଯୋଉଠି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ସାଇଟ ଥିବ ସେଠି ଯାଇକି ଏନଜାଇମ DNA କୁ ବ୍ରେକ୍ କରେଇବ ଯାହା ଫଳରେ ଯେତେଟା କଟିଂ ସାଇଟ ଥିବ ସେଥିରେ ଆମର DNA ଫ୍ରାଗମେଣ୍ଟ ବନିବ। ଏବେ ସେ DNA ଫ୍ରାଗମେଣ୍ଟ କୁ ଆମେ ଆଗାରୋଜେଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଫୋରେସିସ୍ କରିବା। ଓକେ ସୋ ଆଗାରୋଜେଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଫୋରେସିସ୍ ରେ କଣ କରିବା ଆମେ ଟୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ DNA କୁ ଜଷ୍ଟ ତ ଜେଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଫୋରେସିସ୍ ଯେତେବେଳେ କରିବା ଆମେ ଜେଲ ରେ ଦୁଇ ତିନିଟା ୱେଲ ଥିବ ସେଥିରେ ଆମେ ତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ୱେଲ ରେ ଆମେ ସାମ୍ପଲ ଏକ୍ସ ଆଉ ସାମ୍ପଲ ନେବା ଦେଖ ସେ ସ୍ପେସିସ୍ ଏକ୍ସ ଆଉ ସ୍ପିସିସ୍ ୱାଇ ତ DNA ଅଫ ସ୍ପିସିସ୍ ଏକ୍ସ ଗୋଟେ ୱେଲ ରେ ଲୋଡ ହବ ଆଉ DNA ଅଫ ସ୍ପିସିସ୍ ୱାଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋଡ ଦେଖ ଏଠି ସ୍ପିସିସ୍ ଏକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ୱାଇ ଲାଷ୍ଟ ଦିଟା ଯୋଉ ୱେଲ ଅଛି ୱେଲ ମାନେ ହୋଲ ଟାଇପ ର ଅଛି। ଗୋଟେରେ ଏକ୍ସ ଲୋଡ ହେଇଛି ଏକ୍ସ ର DNA ଆଉ ଗୋଟେ ୱାଇ ର DNA ଲୋଡ ହେଇଛି। ଦେନ୍ ଆମେ ତାକୁ ଆଗାରୋଜେଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଫୋରେସିସ୍ କରିବା ଏବେ DNA ଟା ତାଙ୍କର ସାଇଜ ହିସାବରେ ସେପାରେଟ ହବ ଇଟ ଫର୍ମସ ଦ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ସି separated DNA bands. Okay, what is the charge of DNA? Who knows? What is the charge of DNA? Anyone knows? Charge of DNA is negatively charged. Okay, why it is negatively charged? So because of the present of phosphate group PO4 minus. DNA कोथरे तैयारी it's a polynucleotide chain ଆଉ ଗୋଟେ न्यूक्लियोटाइड रे कोन अछि pentose sugar nitrogenous base and a phosphate group PO4 minus and because of that PO4 minus the charge of the whole charge of the DNA is negatively charged तो इलेक्ट्रोफोरेसिस हम जेतेले करिवा नेगेटिव चार्ज जो पटे थिबो सेही पटे हमें DNA टाको लोड करिवा then जेहेतु एटा नेगेटिवली चार्ज it will move towards the positively charge देखो एठी जो पॉलीएक्रिलामाइड जेल लिखा ହେଇଛି ସେଥିରେ देखो गोटे पटे नेगेटिव गोटे पटे पॉजिटिव लिखा ହେଇଛି तो जो पटे नेगेटिव आमे सेही पटे DNA टाको लोड करछे राइट so it will be separated according to the charge and mass तो तार चार्ज और मास हिसाब रे it will move away पॉजिटिव चार्ज आडू अट्रैक्ट हेकी DNA मूव करिवो केते जाय मूव करिवो जे पर्यंत तार माने जोटा साइज तार बड़ थिवो it will form a band near the well ଆଉ जोटा साइज छोटो थिवो से बहुत जल्दी मूवमेंट करिवो और बहुत आगो को मूवमेंट करिवो so it will form band away from the well. So after the gel electrophoresis then we'll use the radioisotope probe. Probe रो काम कोन probe रो काम होची एटा गोटे small fragment of DNA जोटा कि जाय कि तार complementary DNA जोटी थिवो सेठी बाइंड हबो तो एठी agarose रे जोटी तार complementary DNA सेठी बाइंड हबो ओके सेठी बाइंड हला परे देन we'll see the जेहेतु एटा रेडियो आइसोटोप ହେଇची आमे ताताको रेडियोग्राफ देखि परिया तो जोठी जाय कि प्रोब बाइंड हेतिबो हमकु सेठी रेडियोग्राफ देखा जिवो माने हम पर्टिकुलरली जो डीएनए फ्रैगमेंट आमे देखिया को चाहूचे कोठी अछि तो आमे सेठी देखि परिया सी हियर hybridization of the DNA bound membrane then washing to remove the unbound probes तो आमे प्रोब को अलाउ करले बाइंड करिया पई तापर आमे ताको वॉशिंग करिवा जेल को सो दैट जोठी प्रोब बाइंड न हेतिबो they will be washed out then DNA will covalently bound to the probe तो probe एबे बाउंड होबो का सहित जोठी तार कंप्लीमेंटरी डीएनए थिबो ता सहित से बाउंड करिवो ओके then we will expose this gel to the x-ray
एक्सरे को आम एबे एक्सपोज करवा तो एक्सरे एक्सपोज कले हम कोठी जोठी दिस रेडियो लेवल आइसोटोप बाइंड हेतिबो रेडियो लेवल प्रोब जोठी बाइंड हेतिबो से जगह रे हमको रेडियोग्राम देखा जिवो तो से रेडियोग्राम देखिक आम कहि परिबा कि को जगह रे हम टार्गेट सीक्वेंस टा अछि तो एमिति आम दुईटा दुईटा फिश रो डीएनए को आम डिफरेंस जानि परिबा बाय यूजिंग द मॉलिक्यूलर मार्कर्स सो मॉलिक्यूलर मार्कर काम कोन एक्चुअली आम एठी यूज करूचे टू डिफरेंशिएट बिटवीन द टू फिश आम दीटा फिश रो जीन रे ता जीनोम रे कोन डिफरेंस अछि ताको हम जानि परिबा बाय यूजिंग द मॉलिक्यूलर मार्कर्स सो वन ऑफ द most useful molecular marker is RFLP restriction fragment length polymorphism then another marker is AFLP amplified fragment length polymorphism see here the diagram here is the process we have to again isolate the DNA for amplified fragment length polymorphism AFLP isolated DNA similarly will go for the cleavage by the restriction enzyme DNA आम आइसोलेट का बाहर माने कले कहार सैंपल को सैंपल आम नौचे फिश सैंपल so fish रो DNA isolate करवा then we'll treat with the restriction enzyme then DNA fragment will be produced and here next step रे आम कोन करबा will bind the adapter sequence कारण एठी आमे sequence जानिने पूर्व restriction fragment length polymorphism रे हमको टारगेट सीक्वेंस जाना थिला फिश रो सीक्वेंस टा कोन तो ता हिसाब रे आमे गोटे डीएनए प्रोब डिजाइन करथले कॉम्प्लीमेंटरी किंतु एठी आमे डीएनए सीक्वेंस आमे जानिने फिश रो कोन अछि तेणु आमे एठी गोटे अडाप्टर सीक्वेंस आगो ऐड करिवा कोथरे जो डीएनए फ्रैगमेंट आमे बनै छै तेरे अडाप्टर सीक्वेंस ऐड करिवा देन विल गो फॉर द प्री एम्प्लीफिकेशन यूजिंग द पीसीआर मेथड आमे यूज करिवा देन आमे एम्प्लीफाई करिवा along with the adapter the DNA fragments will be also amplified okay so here we will use the primers to amplify the DNA जेतले हम PCR सब जानि छ polymerase chain reaction PCR सुनि छ polymerase chain reaction PCR आमे कोन करबा गोटे DNA फ्रैगमेंट को आमे पाखरे बहुत कम सैंपल DNA जदी अछि आमे ताको बहुत सारा कॉपी बनै परिया बाय यूजिंग द PCR मशीन तो सेथिरे गोटे यूज हुए प्राइमर जे कि एम्प्लीफिकेशन प्रोसेस टा स्टार्ट करे सिंथेसिस फेज टा स्टार्ट करे तो हम अभी प्राइमर हम एठी यूज करबा labeled primer that is labeled with a radioisotope or something which can be fluorescing so these labeled primers are used to amplify the DNA एबे हम amplify करबा DNA को by using the labeled primer then we'll go for the gel electrophoresis एबे gel electrophoresis जिमा देखो gel electrophoresis लिखा है ओके टेस्ट 1 and 2 1 2 माने 1 रे फिश नंबर 1 रो सैंपल 2 रे फिश नंबर 2 रो सैंपल ओके तो हम एबे फिश 1 और फिश 2 रो हमको बैंड मिली गला माने हमें जो ताको रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन करथिले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करके केतरा फ्रैगमेंट हेची हमको एठी मिली जिवो तारो डाटा तो एठी हमें जानि परिबा कि फिश 1 और फिश 2 भितरे किछि सिमिलरिटी अछि कि नाही तारो जीनोम भितरे सी हियर टेस्ट 1 एंड टेस्ट 2 एडी बैंड तक टेस्ट 1 रे बहुत ऊपर दुईटा बैंड फॉर्मेशन करछि टेस्ट 2 रे तीनटा बैंड फॉर्मेशन करछि जोडा कि तळे ता माने एठी हमें कहि परिया फिश 1 और फिश 2 भितरे सिमिलरिटी किछि नाही कारण तांकर डीएनए मेकअप अलगा तांकर मॉलिक्यूलर मार्कर अलगा सिमिलरली आ गोटे मार्कर अछि आरएपीडी रैंडम एम्प्लीफाइड polymorphic DNA this is another type of molecular marker which is used in the aquaculture system to compare the two fish so here this RAPD involved first see we can randomly amplify the DNA by taking the random primers so we have the DNA am pakhre DNA अछि हम sample ru fish number 1 fish number 2 ru sample collection करछे am pakhre DNA अछि then we'll randomly amplify the here the name is random amplified polymorphic DNA randomly amplified माने आमे एबे जो प्राइमर यूज करबा सेटा स्पेसिफिक नो आमे रैंडम प्राइमर एठी यूज करबा जोटा कि रैंडमली जाई कि गोटे पर्टिकुलर डीएनए फ्रैगमेंट को से एम्प्लीफाई करिवो okay so here we are using the random primer see the diagram 8.12 okay random amplification lekha haichi this is DNA template then we are using two random primers for the amplification process so random primers are universal primer which can bind to
any DNA and amplify the DNA. So next what will happen, random primer ro joti complementary sequence thibo se ta pakhare jai ki se bind karibo au DNA amplification start karibo. Okay, so now we have the DNA amplified by using the random primer. Next we will go for the gel electrophoresis. Amplification ଆମେ କେମିତି କରିବା, PCR यूज କରିବା, କାରଣ PCR ହିଁ ଗୋଟେ ମେସିନ ଯୋଉଟା କି ଆମର DNA କୁ ଆମ୍ପ୍ଲିଫାଇ କରିବ, ମାନେ DNA ର କପି ବନେଇବ। କେମିତି ବନେଇବ, ଆମେ ଏଠି ପ୍ରାଇମର ୟୁଜ କରିକି ବନେଇବା। तो आम ये रैंडम प्राइमर नेले देन पीसीआर करके आम डीएनए को एम्प्लीफाई करवा कहार पीस नंबर 1 पीस नंबर 2 टू सैंपल्स फ्रॉम टू डिफरेंट पीसेस दे विल गो फॉर द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सी हियर टेस्ट ए टेस्ट बी लिखा है राइट सो टेस्ट ए इज the sample from fish A and test B is sample from fish number B. So here what we are seeing, here also we are seeing the bands. अच्छा ये फास्ट रे गोटे बैंड अछि कंटीन्यूअस बैंड जोटी लिखा है मार्कर। ओके, मार्कर रा मीनिंग कोन, मार्कर एक्चुअली यूज हुए कोन डीएनए लैडर। डीएनए लैडर कोन जहा को जहार आमे साइज ऑलरेडी जानि छे, तो आमे फर्स्ट वेल रे अगर जेल रो फर्स्ट वेल रे आमे डीएनए लैडर लोड करिवा जहार साइज हमको जणा अछि। ओके, तो आमे ता सहित ही टेस्ट ए आ बी को कंपेयर करछे, तो लैडर को देखि के आमे जानि परिबा कि माने जो डीएनए फ्रैगमेंट हमको मिलछि तार साइज केते। सी हियर टेस्ट ए एंड टेस्ट बी तार जो हमको आसीछि बैंड डीएनए रो बैंड आसीछि दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट। जदि डीएनए दि जनकर एका थांदा ए आ बी सैंपल रो जो बैंड आसी थांदा एकाडी माने गोटे लाइन रे आस्तांदा, एठी देखो गोटे लाइन रे आसुनी अलगा अलगा आसुची। तेणु तेणु आमे कहि परिबा कि दिस सैंपल ए एंड सैंपल बी they have two different pieces, तांको भितरे किछि सिमिलरिटी नाही। Similarly we can go for another marker that is microsatellites. Okay, microsatellites is another molecular marker present in the DNA. ए सब molecular marker human case रे भी अछि, that is present in fish and all animals आउ ह्यूमन रे भी ए मॉलिक्यूलर मार्कर सब यूज हुए टू कंपेयर द सैंपल। जेमिति कि क्राइम सीन रे हमको जदी किछि सैंपल मिलुची, ओके किछि गोटे को गोटे क्राइम हेची, आमे सस्पेक्ट जानि छे कि एई दि जण माइट बी सस्पेक्ट माने क्राइम टा करिसंती, तो आमे सेठी कोन करछे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करूछे राइट। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग केमति हुए, से माने मॉलिक्यूलर मार्कर ही यूज करंती। कोन हमको आमे जहा को सस्पेक्ट करछे ताठो सैंपल नेबा आउ क्राइम साइट रे हमको जो सैंपल मिलिची सेई दुटा सैंपल को आमे एठी कंपेयर करिवा। तो आमे कोन करबा आरएफएलपी करिवा, रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। तो सेई बोले आमे जेमति प्रोसेस पढले रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म सेई प्रोसेस आमे यूज करके आमे एमति डीएनए तार फ्रैगमेंट बनेबा आ ताको सेपरेट करिवा जेल रे। जदि सेई क्राइम सीन रे जो सैंपल मिलिची तार डीएनए फ्रैगमेंट आउ आमे जहा को सस्पेक्ट करूचे तार डीएनए फ्रैगमेंट सेम आसी गला, माने आमे जहा को सस्पेक्ट करचे ही और सी इज द क्रिमिनल। तो एठी भी सेई बोले आमे दीटा फिश को जतले कंपेयर करिवा आमे तांकर मॉलिक्यूलर मार्कर्स यूज करिवा। व्हाट आर डिफरेंट मॉलिक्यूलर मार्कर्स, दीज आर डिफरेंट मॉलिक्यूलर मार्कर्स RFLP, AFLP, RAPD, then microsatellites. What are microsatellites? So these are short DNA sequences which are repeated to several times across the genome of organism. Okay, एगुडा होची कोन गोटे पर्टिकुलर सीक्वेंस जोटा कि बहुत ही मल्टीपल टाइम रिपीट हेतिबो आउ गोटे जीनोम रे मल्टीपल जगह रे थाए। These repeats are highly variable, non-coding and selectively neutral. तो ये जो माइक्रोसैटेलाइट्स एगुडा वेरिएबल फ्रॉम वन फिश टू अनदर, सब फिश रो माइक्रोसैटेलाइट सेम नुह। लेट्स ए पर्टिकुलर सीक्वेंस दैट इज ATCG, तो ATCG विल बी रिपीटेड टू मेनी टाइम्स। तो जो पोर्शन रे एई भला ATCG रिपीट हेतिबो मेनी टाइम्स ताकू कहा जाय माइक्रोसैटेलाइट। तो को फिश स्पीसीज रे ATCG 10 टाइम्स रिपीट हेतिबो, कोथरे 20 टाइम्स रिपीट हेतिबो। ओके, तो 10 टाइम्स जोटा रिपीट हेची तार फ्रैगमेंट ऑब्वियसली छोटो हबो, जोटी 10 टाइम्स रिपीट हेची 20 टाइम्स रिपीट हेची। तो हमें सेई भलिया एठी दीटा फिश रो माइक्रोसैटेलाइट को भी मार्कर भलिया यूज करके हमें डिफरेंशिएट करि परिबा। Okay, so these are highly variable and non-coding. So microsatellite गुडा कोन से माने non-coding DNA, non-coding DNA माने
the DNA which does not code for any protein, ame taku non coding DNA कहवा. Similarly, another molecular marker is SNP, that is single nucleotide polymorphism. Single nucleotide polymorphism means what? Differences. Okay, differences between two fish. तो आम ये सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म माने गोटे सिंगल न्यूक्लियोटाइड रे डिफरेंस थिबो बिटवीन द टू फिश. सेटा आमे केमति जानिबा गोटे सिंगल न्यूक्लियोटाइड रे डिफरेंस अछि कि नाही. ସେଥିରେ ଆମେ ଏଇ ମଲିକୁଲାର ମାର୍କର ୟୁଜ କଲେ ହବନି, ଯୋଉଟା ଏବେ ସବୁ ପଢିଲେ ମାଇକ୍ରୋସାଟେଲାଇଟ, ଆରଏଫଏଲପି, ଏଏଫଏଲପି, ଏଗୁଡା ସେଠି ୟୁଜଫୁଲ ନୁହଁ. ଏଠି ଆମେ ସିଙ୍ଗଲ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଟାଇଡ ପଲିମରଫିନ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସିକ୍ୱେନ୍ସିଂ କରିବାକୁ ପଡିବ. ଫିସ୍ 1 ର DNA ସିକ୍ୱେନ୍ସ କରିବା, ଫିସ୍ 2 ର DNA ସିକ୍ୱେନ୍ସ କରିବା. So we'll come to know whether there is any single nucleotide difference present in fish number 1 and 2 or not. Similarly, another molecular marker is EST, express sequence tags. So these express sequence tags are single pass short unedited nucleotide sequences generated from random sequences of mRNA or cDNA clones library and expressed gene either from single or both ends of the sequence. So these are what? These are unedited nucleotide which is generated from random sequence of mRNA and cDNA. So you studied the DNA library. There are two types of DNA library, genomic library and cDNA library. So when there is making the DNA library, so we are going for the generation of different types of random sequences. Okay, so these random sequences can be also used from this library to compare the genetic makeup of two fish species. So here also we can use these express sequence tags for knowing the difference between the two fish. So coming to the, so these are different types of molecular markers which are used to differentiate the two fishes. Next, coming to the production of transgenic fish. Transgenic fish means what? The fish which is carrying a foreign gene. Then they are transgenic animals, transgenic plant. Okay, पढ़ुचे transgenic animal, transgenic plants कौन? Transgenic plant is a plant which is having a foreign DNA. गोटे foreign gene ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତା ଭିତରେ ପରେଇବା ତାକୁ ଗୋଟେ transgenic plant କୁହାଯାଏ. ସେଟା କେମିତି ବନା ହବ? By using recombinant DNA technology or genetic engineering use କରିକି ଆମେ କରିବା. ଯେମିତି ଆମେ transgenic plant ବନଉଛେ ସେମିତି ଆମେ transgenic animal ବି ବନେଇ ପାରିବା. କେମିତି? ଗୋଟେ animal cell କୁ ନେଇକି ଆମେ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ foreign DNA which is expressed in other animal ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ we can genetically engineer in the animal. So here ଆମେ transgenic fish ବି ବନେଇ ପାରିବା. କେମିତି ବନେଇବା? Similarly, we will take the cells from the fish by using the genetic engineering. ସମସ୍ତେ genetic engineering ପଢିଥିବ RDNA technology. RDNA technology use କରିକି ଆମେ ଗୋଟେ foreign DNA जोटा कि हमको गोटे superior character दउथिबो. Let's say fish is like the size is very small but the fish quality is very like it's good. तो आमे कौन करिवा? The and गोटे आ गोटे फिश थिबो जार साइज बहुत बड़ होउथिबो. तो तार साइज को जो जीन टा कंट्रोल करूची बिगर साइज से जीन टा को आमे आइडेंटिफाई करिवा आउ एई फिश रे आनी कि ताकू जेनेटिकली ट्रांसफर करिवा. केमिति करिवा? जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज करके करिवा. तो जो फिश टा नुआ हमर प्रोड्यूस होला that will be having a larger size and will be having a better quality of meat. So सेही जो प्रोसेस टा होची आ जो नुआ फिश टा हमर बनुची ताकू कह जाउची ट्रांसजेनिक फिश. Trans means what? Other and genic means gene. So the fish which is carrying the gene from some other fish or some other animals ताकू हमें कहबा transgenic fish. So here we can make the transgenic fish by using the rDNA technology. So here there are various there are top 10 countries in table number 8.3. There are top 10 countries which are producing this aquaculture by using various techniques. Okay, so top is like China is the highest, then India, then these are the countries which are the largest producer of the fish that have fish genetic resources, have a very large fish genetic resources. Okay, so this is all about the
uh, molecular markers and genetic pieces. Transgenic feces, then the genetics of feces or genetics applied in the fish to compare the feces or to develop the different types of feces, like breeding by making the transgenic fish or going for the hybridization, so that we can get better quality of fish. So we are just playing with the gene, the genetic makeup of the fish, and we are like going for the more production of the fish. So these are different techniques. Next, coming to the next unit, unit number 9, ट्रांसजेनिक फिश बुझीगला समस्ते आरडीएनए टेक्नोलॉजी पढ़िଛ ना तुम माने जेनेटिक इंजीनियरिंग और आरडीएनए टेक्नोलॉजी पढ़िଛ केबे बीएससी रे पढ़िथबो अरे सुना जाउची कि नहीं तुम मानू ଆଉ ମ୍ୟାମ୍ ମନେ ନାହିଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ମନ ନାହିଁ ଆଉ ସେଇ ଭୁଲିଗଲି। ପ୍ରୋସେସ पढ़िबो हैला प्रोसेस टा पढ़िबो जानि परिबो केमति ट्रांसजेनिक फिश बना होची ओके ओके मैम। नेक्स्ट फिश एज ए फूड ओके तो फिश एज ए फूड हमें काहे की यूज करछे बिकॉज़ फिश इज रिच इन प्रोटीन बहुत सारा प्रोटीन फिश रे रहउची तेनु हमें फिश को एज ए फूड हमें फूड भाबरे ताको यूज करछे okay so nutritive value of fish so this fish contains a large variety of proteins fish रे बेसी कोन थाए proteins okay protein बेसी थाए fish रे तो fish as food is consumed in a variety of ways mostly cooked salted raw and processed तो हमें डिफरेंट वे रे फिश को एज ए फूड यूज कर पारछे फर्स्टली आइदर हमें ताको कुक करके खाउछे और सल्टेड को जगह रे रॉ फिश भी खाउछंदी लाइक चाइना रे रॉ फिश भी खांती okay so different way we can eat the fish why we are eating the fish this have a very nutritive value okay तार बेसी nutritive value रहउची as it is rich in the proteins protein रे rich अछि so this the proportion of this so the which part of the fishes are edible like all the parts we cannot eat so fish रो सब part हमें खाई परछे तार fins को खाई परने fins को फिंगी दउचे तार skin को फिंगी दउचे right so the parts of the fish which are we are eating that is known as edible part so the proportion of this edible part of the fish that is varies from fish to fish ओके तो केतिकी पोर्शन आमे एडिबल केतिकी पोर्शन आमे फिश रो खाइबा सेटा फिश रु फिश वेरी करूची ओके सो दिस लाइक प्रॉन्स क्रस्टेशियंस तांकर आमे बेसी पार्ट खाउचे कि बेसी पार्ट हम फिंगी दोचे राइट प्रॉन रो बेसी पार्ट हम फिंगी दोचे कंकड़ा जेम थेला तो तांकर बेसी आमे पार्ट गुडा फिंगी दोचे अधा भी सेगुडा यूज भी होनी तो सेई भला फिश वेरियस ऑफ फिश रो तार एडिबल पार्ट इज वेरीज फ्रॉम स्पीसीज टू स्पीसीज okay so this proportion of edible matter or edible coefficient so edible coefficient kono the proportion of edible fish in a fish is known as edible coefficient which is varies from 0 to 1 okay 0 ru 1 vary kare kono edible coefficient kono it is the proportion of edible part of fish which is varies from species to species तो जनरली एटा केते रु केते वैरी करे 0 to 1 okay if the this coefficient edible coefficient is 0 then we can say that fish cannot be edible सेटा माने फिश हमें खाई ही परिबानी edible coefficient 0 माने तार edible proportion is 0 माने तार फिश रो को पार्ट हमें खाई परिबा नै माने that is not an edible fish if the coefficient is 100% then the total fish can be edible आमे तार कोनोसी पार्ट भी फिंगुने each and every part is edible in that fish तो ये सेही भला सब फिश रो edible coefficient it varies from 0 to 100 if it is 0 then that is a totally uneditable fish and if it is 100 that means that is a total edible fish okay so there is a factor that is known as nutrient retention factor nutrient retention factor is what it is defined as coefficient of nutrients
preserved, especially vitamins and minerals in food after cooking or after processing. Okay, generally when we are eating the fish, ଆମେ ଯେତେବେଳେ fish ଖାଉଛେ, we are first we are cooking it or we are processing it. ଆମେ ତାକୁ process କରୁଛେ or cooking କରି ଖାଉଛେ. Do you think cooking time ରେ କିଛି ତାର nutritive value loss ହଉଛି କି ନାହିଁ cooking time ରେ? Cooking time ରେ nutritive value of the not only fish, ଆମେ ଯେତିକି ବି ଖାଦ୍ୟ cook କରିକି ଖାଉଛେ ତାର nutritive value is changing after the cooking. Cooking ପରେ ତାର nutritive value change ହବ. କାହିଁକି? ଆମେ ଯେତେବେଳେ cooking କରୁଛେ high heat supply କରୁଛେ, protein is denatured, you know, high heat ରେ protein denature ହେଇଯାଏ. So କିଛି କିଛି protein ତାର denature ହେଇଯିବ. Okay, ତ ସେଇଭଳିଆ every food which is cooked, the nutritive value is decrease. ତାର nutritive value decrease ହେଇଯିବ. ତ nutrient retention factor କଣ? So it is defined as the coefficient of nutrient preserved, especially the vitamins and minerals in food after cooking or processing or storage. ତ ଆମେ cooking ଆଉ processing କଲା ପରେ ତାର ଯେତିକି nutritive value ରହିବ ତାକୁ କୁହାଯାଏ what? Nutrient retention factor. So this nutrient retention factor is varies from 0 to 1. 0 to 1, where 1 represent the 100% retention. Okay? Similarly, ଯେମିତି ଆମର coefficient edible coefficient 0 ରୁ 1 ଥିଲା, ସେଇଭଳିଆ retention coefficient also it varies from 0 to 1. So 1 ଯେତେବେଳେ ଅଛି ମାନେ ସେଠି 100% retention ହଉଛି, ମାନେ ଆମେ cooking କଲେ ତାର nutritive value କିଛି decrease ହଉନି. If it is 0, then total loss of nutrition, ସେଠି total nutrient ଯେତିକି ଅଛି ପୁରା loss. nutrient ମାନେ protein ହେଇଥିବ, vitamins ହେଇଥିବ, minerals ହେଇଥିବ, ଏଗୁଡା ହିଁ nutrient fish ରେ. ତ ଆମେ cooking କଲା ପରେ ଯଦି 1 ଆସୁଛି ତାର retention value, ତା ମାନେ there is complete retention of nutrient, ମାନେ ଆମେ cooking ର କିଛି ଫରକ ପଡୁନି ତା ଉପରେ, nutrient value is same. If it is 0 means total nutritive value is lost. So 0 between 1, 0 ରୁ 1 ଆସିବ ମାନେ in between, କାହାର 40% loss ହଉଛି, ତା ମାନେ ତାର retention କେତେ ଆସିବ 0.4, କାହାର 60%. ତ ଏଇ ଭଳିଆ ଯେତିକି retention କରିବ that will vary from 0 to 1, and that is known as nutrient retention factor. So this table 9.3, this is the nutrient retention factor for various nutrients in moist and dry cooking. Moist and dry cooking ମାନେ କଣ? moist cooking ମାନେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଦେଇକି boil କରୁଛେ ସେଟାକୁ କୁହାଯାଏ moist cooking. dry ମାନେ ଆମେ ପାଣି ଦଉନେ, ସେମିତି ହିଁ ରାନ୍ଧୁଛେ. fish ଟାକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ fry କରୁଛେ ସେଟା କଣ dry cooking କୁହାଯାଏ. fish ଟାକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାଣିରେ boil କରିବା ସେଟାକୁ କୁହାଯାଏ moist cooking. ତ moist cooking ଆଉ dry cooking କରିବା ଦ୍ୱାରା କେତେ retention, nutrient retention factor କେତେ ରହୁଛି. Okay? So moist heat, ଯଦି moist heat କରିବା see protein ର 1 ହିଁ ରହୁଛି. Okay? micronutrients ର ଦେଖ calcium, iron ର ଦେଖ କମି ଯାଉଛି, magnesium ର କମି ଯାଉଛି. Okay? calcium remains the same, ମାନେ calcium ଉପରେ heat ର effect କିଛି ଦେଖଉନି, ସେଥିପାଇଁ ତାର retention value ସେଇ 1 ହିଁ ରହୁଛି. micronutrients vitamins, କଣ vitamins ର ଦେଖ କଣ କଣ ସବୁ ରହୁଛି, C retinol ର 0.9, retention is 0.9 in case of moist heat. ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ପାଣିରେ heat କରେଇବା then retention will be 0.9. if dry heat ଦେବା similarly 0.9, 0.8. এটা ତ low fat fish, fat fish. Okay, differentiate କରିଛି low fat ମାନେ fat ଯାହାର କମ ଥିବ ଯୋଉ fish ର ଆଉ ଯୋଉ fish ର ବେଶୀ fat ଥିବ. So these are different nutrient retention factor for different types of fish and for different type of nutrients. Okay? So what are different composition of a fish? So this is table number 9.4, which shows the proximate composition of edible portion of the some fishes of India. Okay, similar like common carp. Common carp has moisture 74.5%. Moisture means water content. तो fish भीतर water रहुची कि नहीं? तो बेसी water ही रहुची. See, water is 74.5%. Protein percent is
20.8%, fat is 3.1%, and ash is 1.1%. Similarly, Catla रे कौन रहुची तारा moisture 76.3%, protein 19.6%, and fat is 1.3%. Okay, so what is the proximate composition? So this is the proximate composition. So proximate composition कौन? So the proportion of four major constituents when expressed in percentage composition is referred as proximate composition. Okay, आमे जेतले ताको percentage रे देखैबा ताको proximate composition कुहा जाय. So this is percentage: moisture 74.5%, protein 20.8%. So this is just the different composition of nutrient of different fishes of India. This table shows table number 9.4. ସେଠି କିଛି ଗୋଟେ ଆସ୍ ଅଛି, ସେ ଆସ୍ ଟା କଣ? As ଟା protein carbohydrate एगुडा को छाडी देले जोडा बंचुची, that is not useful. माने सेटा किछि protein content माने सेटा nutrient किछि नाही. As कोन आमे जेतले काठटा को जळेई दउचे लास्ट रे जोडा बंची गला सेटा कोन ash कुआ जाय ताको. हां ताको ash कुआ जाय. जो पाउंस जोडा. Similarly fish रे कोन से बळा जहार किछि यूजफुलनेस ही नाही. कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एडा को छाडी देला परे जोडा बंची गला ताको ash कुआ जाय. Okay. Next is energy. So how much energy you are getting from the fish? Fish ru ame kete energy पाउचे. तो fish generally it is contain what? Mostly it contains the proteins, then fats, then carbohydrate. बेसी carbohydrate fish रे न थाए. Fish रे बेसी proteins थाए, then comes to the fat, then to the carbohydrate. Okay, and तापरे आसे fibers. तो बेसी protein आसुची. तो protein ଆଉ fat ଆଉ carbohydrate रू आमे केते energy पाउचे. Okay, so this when this metabolism occurs, this protein metabolism आमे जेतले खाउचे से protein और fat, तो आमे जेतले खाउचे सेटुरु केते energy release होउची. So this table number 9.5. So this is metabolizable energy conversion factor, that is kilocalorie per gram or kilojoule per gram. Okay, so protein केते रहउची? प्रोटीन गोटे ग्राम ऑफ फिश, गोटे ग्राम फिश रे प्रोटीन रहउची 4 किलो कैलोरी. माने जति की गोटे ग्राम फिश हमें जदी नेबा सेथरे जति की प्रोटीन रहउची सेटू 4 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड. ओके, सिमिलरली कार्बोहाइड्रेट also गोटे ग्राम रे 4 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड. फैट इज 9 and fiber is 2. Similarly kilojoule per gram is 17 37. So it is just a data which showing the different types of food components or different types of macromolecules in the fish and how much energy you are getting from each component of the fish. Okay, see here, energy kilocalorie per 100 gram, that is equal to total protein. There is a formula to calculate the energy. हमको केते एनर्जी मिलिबो. ओके, केते एनर्जी मिलिबो सेटा गोटे फार्मूला अछि. एनर्जी दैट इज किलो कैलोरी पर 100 ग्राम. 100 ग्राम माने फिश रे केते किलो कैलोरी एनर्जी बाहरची ताको हमें केमती कैलकुलेट करिया. टोटल प्रोटीन दैट इज ग्राम पर 100 ग्राम into 4. ओके, देन टोटल carbohydrate into 4, then total fiber into 2. ओके, देन टोटल फैट इनटू 4. सी आमे कोन करछे ए जो किलो कैलोरी पर ग्राम ए जो 4 अछि से फैक्टर को आमे मल्टीप्लाई करिकि आमे गोटे फार्मूला माने गोटे फार्मूला अछि तार. तो एनर्जी किलो कैलोरी पर 100 ग्राम, गोटे 100 ग्राम रे केते किलो कैलोरी एनर्जी बाहरची ताको केमती कैलकुलेट करबा. ए फार्मूला टा देखो टेबल तळे जस्ट जो फार्मूला टा अछि टोटल प्रोटीन माने केते ग्राम रो प्रोटीन अछि 100 ग्राम फिश रे. 100 ग्राम फिश रे केते ग्राम रो प्रोटीन अछि इनटू 4. मैडम एठी इपी देखो केते गोटे अछि इपी देखो एठी गोटे मिनिट इपी तळे एठी लिखा आइछ.
Just a minute. EP is total energy proportion. I think P stands for proportion. P. EP is edible portion. Okay, edible Yes, ma'am. portion. Yes, ma'am. So total protein that is gram per 100 gram of the fish. माने गोटे फिश रो एडिबल पोर्शन माने टोटल फिश ओके फिश रो एडिबल पोर्शन जतिक अछि तार टोटल प्रोटीन केते रहउची इन ग्राम इनटू 4 ए 4 टा कोठी आछि सी आमे जोटी कंपोनेंट्स न्यूट्रिएंट्स रे देखिले प्रोटीन केते 4 ए फैक्टर गुडा अछि सब किलो कैलोरी पर ग्राम तो 4 किलो कैलोरी पर ग्राम गोटे ग्राम रे केते बाहरची 4 किलो कैलोरी ओके तो सेति में एटी 4 टा मल्टीप्लाई हेची टोटल प्रोटीन ग्राम इनटू 4 आमे एटी टोटल एनर्जी देखुछ ना किलो कैलोरी तो गोटे ग्राम रे केते बाहरची 4 तो एटी जेते ग्राम थिबो प्रोटीन सेते इनटू 4 किलो कैलोरी एनर्जी बाहरिबो राइट तो एनर्जी किलो कैलोरी इक्वल टू टोटल प्रोटीन in gram into 4 then total fat into 4 then total carbohydrate into 4 then total fat into 9 एटी देखो 9 फैक्टर अछि फैट रे 9 फैट रे केते बाहरची गोटे ग्राम फैट माने ब्रेक हेले सेठू 9 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी बाहरची तो तेणु एठी हमें 9 फैक्टर टा माने टोटल फैट केते ग्राम अछि इनटू 9 हबो सेति कि किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी then into total gram of fiber into 2 fiber केते अछि फैक्टर 2 अछि 2 किलो कैलोरी ऑफ 5 एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ फाइबर तेणु आमे टोटल किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी रिलीज इक्वल टू टोटल प्रोटीन into 4 टोटल कार्बोहाइड्रेट into 4 टोटल फैट into 9 एंड टोटल फाइबर into 2 ए फैक्टर गुडा एठी आमे मल्टीप्लाई करिया सिमिलरली केते किलो जूल ऑफ ग्राम एनर्जी बाहरची सिमिलरली केवन करबा हमें सेट को फैक्टर हमें मल्टीप्लाई करबा 17 17 37 एंड 8 ओके तो गोटे ग्राम प्रोटीन ब्रेक हेले सुटू केते बाहरची 17 किलो जूल ऑफ एनर्जी बाहरची पर ग्राम तो हम जदी किलो जूल यूनिट रे बाहर करबा एनर्जी ताले हमें एई फैक्टर गुडा मल्टीप्लाई करबा 17 17 37 एंड 8 जदी किलो कैलोरी रे बाहर करबा यूनिट रे देन हमें मल्टीप्लाई करबा प्रोटीन रो 4 फैक्टर कार्बोहाइड्रेट 4 फैट 9 एंड फाइबर 2 बुझेला okay so what are present in the fish so different types of nutrients are present along with the moisture first coming to the moisture is what total water content in the fish total fish ro flesh रे water content केते अछि सेटा कहा जाय moisture ओके जोटा कि सबुटु हाईएस्ट अछि हमें पूर्व देखिले मॉइस्चर कंटेंट एटी टेबल रे तो मॉइस्चर कंटेंट ही सबुटु अधिक रहउची फिश रे नेक्स्ट इज द टोटल नाइट्रोजन एंड प्रोटीन तो प्रोटीन नाइट्रोजन कोठी बेसी थाए प्रोटीन रे ही नाइट्रोजन थाए प्रोटीन गुडा कोथरे तयारी प्रोटीन आर मेड अप ऑफ व्हाट इज द मोनोमर्स ऑफ प्रोटीन एमिनो एसिड्स रे कोन अछि नाइट्रोजन बेसी अछि तो प्रोटीन रे बेसी नाइट्रोजन थाए okay so next coming to the nitrogen and protein okay so most commonly useful analytical method to determine the protein content fish रे कोन अछि so there is a method to calculate the protein that is known as zelda method which is used to know how much protein is present in the fish तो फिश टिश्यू को हमें ग्राउंड करबा सेतरु केते प्रोटीन बाहरची हमें गोटे मेथड यूज करके एस्टिमेट कर परबा दैट इज जेल्डाल मेथड और आहुरी बहुत सारा मेथड अछि जोरा कि हमें प्रोटीन को एस्टिमेट कर परबा ओके केमिति सो दिस फार्मूला टोटल प्रोटीन इक्वल टू total protein gram per 100 gram of EP means what edible part edible part
ओके एडिबल पार्ट ऑफ द फिश तो 100 ग्राम एडिबल पार्ट फिश रे केते ग्राम रो प्रोटीन रहइबो सेटा केमिति कैलकुलेट हबो टोटल नाइट्रोजन that is gram in 100 gram of edible part into 6.25 factor ये जो प्रोसेस टा यूज होची जेल्डा मेथड रे देखा होची लेखा है जेल्डा मेथड रे जनरली कर बाहर सेठी नाइट्रोजन कंटेंट केते अछि फिश रे सेटा बाहर तो नाइट्रोजन कंटेंट केते सेतरे जे हमें ओटे 6.25 फैक्टर टा मल्टीप्लाई करबा देन टोटल प्रोटीन कंटेंट आसी जिवो total protein content of the fish next is fat okay so fat total fat the value of fat in proximate composition refers to total lipids which includes कौन फैट माने कौन लिपिड्स सब कौन अच्छी ट्राइग्लिसराइड्स ओके स्टिरॉल्स फॉस्फोलिपिड्स ओके स्पिंगोलिपिड्स एगुडा कौन सब फैट्स तो मेजर फैट सब फिश रे कौन अच्छी ट्राइग्लिसराइड्स स्टिरॉल्स ओके स्टिरॉल मींस cholesterol then phospholipids and other related lipids okay like sphingolipids eguda sabu fat content of the fish so this fat content is determined semti fat kete achi taku bi ame determine kari pariba by using various method by using gravimetric method this is a method to calculate the amount of fat present in the fish similarly carbohydrates are also present in the fish okay so in raw fish the content of carbohydrate are generally neglected okay carbohydrate बहुत ही कम थाए fish रे सेत पई जो माने को डायबिटीज हेतिबो देखिबो तांको फिश खाया को मना न थाए बट चिकन मटन ए सब खाया को मना थाए काहे कि बिकॉज़ फिश रे बेसी कार्बोहाइड्रेट न थाए बेसी प्रोटीन थाए ओके सिमिलरली कार्बोहाइड्रेट केते अछि ताकू भी हमें कैलकुलेट कर परबे देयर इज अ फार्मूला ये सीधा फार्मूला हियर कार्बोहाइड्रेट that is gram per 100 gram of edible part is equal to 100 minus moisture that is gram per 100 gram of edible part minus total protein minus total total fat then minus total fiber and minus total mass तो हमें जितनी की moisture 100 रू moisture total protein total carb sorry total fat total fiber और total mass एटा को माइनस कर देला जति की पार्ट रहला दैट इज द कार्बोहाइड्रेट फिश रे अछि कोन मोस्टली मॉइस्चर अछि देन कोन अछि अधिक सबुठु मॉइस्चर पर सबुठु अधिक कोन अछि प्रोटीन्स परे फैट्स परे फैट्स परे फाइबर परे यास रु जति की आ बंची गला बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट रो अछि कोन कार्बोहाइड्रेट तो हमें कार्बोहाइड्रेट केमति कैलकुलेट करबा आमे 100 रु टोटल जति की मॉइस्चर कंटेंट हला प्रोटीन फाइबर फैट एस को माइनस कला पर जति की बंचला दैट इज द कार्बोहाइड्रेट पार्ट बुझियला okay so coming to the proteins so proteins are the major biomolecules in the fish body रे सबुठु बेसी प्रोटीन थाए आ कोठी प्रोटीन थाए बेसी फिश रो जो फ्लेश पार्ट जो मसल जोटा हमें खाउचे सेई तरह ही प्रोटीन बेसी थाए okay so these fish proteins are considered to have high nutritive value with immense health benefits आ फिश रो जो प्रोटीन अछि that is easily digestible by the human body सबुठु भलो डाइजेशन फिश प्रोटीन ही हुए आ फिश प्रोटीन टा बेसी कोड थाए तार फ्लेश पार्ट रे थाए okay and these proteins are the polymers of what these are the polymers of amino acids okay so these are the polymers of amino acids which are found in the flesh or muscle part of the fish okay see here if we'll take a क्रॉस आमे जो फिश टाको काटुचे पूरा मझिरु देखिया पई ए डायग्राम भलिया ना ओके स्टिक कट ऑफ द फिश शोइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स ओके आमे तले फिश को काटुचे आमे तले माछो किनिया को जाउचे एई भलिया काटि के दोउची त हमको भीतर गोटे फांका थिबो जोटा कि होचे एब्डोमिनल कैविटी एटा होचे तोर एब्डोमिनल कैविटी जोटी कि तार डाइजेस्टिव सिस्टम से सब थिबो जोटा कि काडी दियंती ओके तो आमे जे तार क्रॉस सेक्शन नेबा सी द क्रॉस सेक्शन ओके जस्ट अंडर द स्किन जस्ट तळे तार कोन अछि सबक्यूटानियस एडिपोज टिश्यू रे कोन थाए बेसी फैट थाए स्किन तळे ही बेसी फैट थाए ना फिश खाइछो ना नहीं Yes, फैट ma'am. तार कोठी थाए बेसी जस्ट स्किन तळे
जोटा कह जाए एडिपोज टिश्यू तो जस्ट स्किन तले इज एडिपोज टिश्यू देन इज मायोसेप्टम मायोसेप्टम मींस दैट इज द सेप्टम बिटवीन टू मसल लेयर दीटा मसल लेयर भितरे जो गैप टाकू कह जाए मायोसेप्टम देन कम्स टू द व्हाइट मसल तापर आसुची व्हाइट मसल रेड मसल आ व्हाइट रेड मसल भितरे गोटे पिंक मसल रहउची ओके देन कमिंग टू द इंटरमीडिएट मसल abdominal cavity then subcutaneous subcutaneous adipose tissue एपट adipose tissue रहउची सेपट adipose tissue होउची just beneath the skin in between सब muscles रहिला ओके को टाइप रो मसल्स व्हाइट मसल रेड मसल माछ काटिया देखिथिबो जस्ट स्किन Yes, पर जो ma'am. मसलटा सेटा केमति देखा जाए धोला देखा जाए और टुवर्ड्स एब्डोमेन जो मसलटा रेड देखा जाए so different types of muscles and adipose tissue and these muscles are rich in protein a muscle रे ही बेसी protein थाए okay so the primary source of protein from the edible ep the edible part of this muscle is the primary source of protein is the that is the edible part which is the muscle in the fish so generally skin ଆଉ fins एगुडा को केही प्रिफर करंदिनी खाया पई काहे कि muscle is rich in the protein so fish muscles are categorized into three type ତିନିଟା ତାର fish muscle ରହୁଛି ଯୋଉଥିରେ କି protein ରହୁଛି ବେଶୀ white muscle ଯୋଉଟା କି major amount ବେଶୀ white muscle ଥାଏ okay then red muscle and intermediate pink muscle okay white ଆଉ red ଭିତରେ intermediate ଟିକେ pinkish color muscle ଥାଏ okay so three types of muscles which are found in the fish and these muscles are differentiated by the myoceptum ये जो myoceptum कहली जोटा कि मसल को डिफरेंशिएट करछि सी व्हाइट मसल रेड मसल ता भीतर रहउछि सेप्टम जोटा कि ताको डिफरेंशिएट करछि ओके सो दीज आर different three types of muscles which are rich in protein in the fish okay so according to the content of the crude protein माने आमे just protein रो जति की sorry fish रो जति की protein आमे purify करि परिबा ताऊ कह जाय crude protein so fish are classified into four categories okay so crude protein less than 10% 10 to 15% 15 to 20% and more than 20% तो आमे जदि fish रो edible part को नै की आमे तारो protein content मापिबा so generally that varies from 10 to 25%. Okay. The protein content in the fish that is present in the muscle is varies from 10 to 25% and which is different for the different fish. Sabu fish रे हमें same amount of protein मिलिबोनी हमको different रहिबो. So according to the protein content of the fish they are categorized into various type like crude protein less than 10 तो जହାର protein percentage less than 10 तक कहा जाए माने they are one type of fish similarly protein content 10 to 15% then some fishes they found 15 to 20% and some fish they have more protein content that is more than 20% okay so what are these proteins so these proteins in the fish they are generally 60 to 65% is contractile proteins that is actin myosin एडा सब कोन contractile protein माने हमर contraction सब हेल्प करंदी सुनिच मसल आम मसल रे भी एगुडा अछि actin myosin protein ओके तो फिश रो जो प्रोटीन अछि तार 60 to 65% is that is myosin actin actomyosin troponin okay and 30 to 35% are enzymatic or stroma protein or collagens are about 3 to 5% so these are the different constituent of proteins found in the fish so mostly they are contractile means that is present in the muscle and helps in the contraction like actin myosin actomyosin troponin and 30 to 35% are enzymatic proteins okay and 3 to 5% they are the collagens protein so these are different proteins present in the fish so these are some biological functions of some amino acid from the fish hydrolytes okay तो आमे जो फिश खाउचे फिश रो आमे प्रोटीन नौचे माने प्रोटीन दा इनडायरेक्टली हमको कोन हम बॉडी को एमिनो एसिड्स प्रोवाइड करची जतले आमे फिश खाउचे
आम फिश जाइए डाइजेशन होची बॉडी भितर डाइजेस्टिव सिस्टम रे प्रोटीन डाइजेस्ट होची प्रोटीन डाइजेस्ट हेले सेटू कोन बाहरिबो एमिनो एसिड्स तो सेई एमिनो एसिड्स आम बॉडी रे तार फंक्शन कोन सी एमिनो एसिड्स aspartic acid glutamic acid glycine एगुडा सब कोन डिफरेंट एमिनो एसिड्स तार काम कोन इट एनहांस वुंड हीलिंग जदि हमर कोठी किछि कट हे जाउची वुंड होची ताकू हीलिंग करूची को एमिनो एसिड these three amino acids are aspartic acid glutamic acid glycine similarly histidine lysine tyrosine methionine आंकर काम कोन radial scavenger of oxidative reaction so it act as antioxidant तो आम बॉडी रे रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जोटा कि हमको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस करे ताकू कैंसल आउट करे एई सब एमिनो एसिड हिस्टिडिन लाइसिन तो आमे एई सब एमिनो एसिड्स हमको व्हिच रु मिलुची जार कि आम बॉडी रे डिफरेंट रोल होची तो सेटा होची टेबल नंबर 9.6 okay like aspartic acid leucine glycine they helps in the cytotoxicity against cancer cell जदि किसी कैंसरस सेल बॉडी रे फॉर्मेशन होतिबो ता अगेंस्ट रे काम करिवो ए सब एमिनो एसिड्स so these are different amino acids and their function in our body okay so there are two types of amino acids dita type of amino acids अछि सुनिचो essential amino acids and non essential amino acids what is essential amino acid and what is non essential amino acids के कोइ परिबो essential amino acids are the amino acids which are not synthesized by our body ଆମ body रे भी amino acid तैयारी होची जानचो कि नहीं जेति कि amino acid ଆମ body रे synthesize होची ताकू कहै जाय non essential amino acid आ जो amino acid ଆମ body रे synthesize होउनी आ आमे सेटा बाहरु थ्रो डाइट आमे से amino acid को खाउचे ताकू कहै जाय essential amino acids okay so these fishes they are rich in essential amino acid that is histidine isoleucine leucine lysine methionine phenylalanine threonine tryptophan valine एगुडा कोन सबु एसेंशियल अमीनो एसिड माने हम बॉडी एई अमीनो एसिड को तयारी करनी हमें सेई अमीनो एसिड को सब बाहरु हमको नेबा पड़िबो तो एई सब अमीनो एसिड हमको फिश रु मिल जाउची okay similar see here this is just a table which shows different types of essential amino acid found in different types of fish like histidine okay so it is like more in the grass carp so ei fish re histidine besi dekha jaye 2.69% that is found in the grass carp isoleucine carp re 4.6% achi 4.28 in grass carp so these are different types of eguda kon सब essential amino acid histidine isoleucine leucine lysine methionine phenylalanine threonine tryptophan valine आउ सेडा तार कंपोजिशन सब केते को फिश रे केते अछि सेडा टेबल देखैछि okay next constituent of your fish is lipids so after the moisture सबुरु बेसी moisture थाए water content moisture परे बेसी थाए कोन proteins जोटा के पढिले different types of proteins रहउची different types of amino acids रहुची and then coming to the lipids next protein pore next constituent of fish is lipids or fats fats or lipids are heterogeneous group of compounds that are regarded as most concentrated form of the dietary energy source okay so these fats they are located where it is located in the subcutaneous tissue that is the adipose tissue को जगह रे अछि belly flap बेली जगह अछि पेटो पीस से पेटो पीस खाइबा को लोक भल पांती पेटो पीस रे बेसी थाए फैट ओके आ से फैट जोगो ही ता टेस्ट भलता है बेली फ्लैप हेड रीजन रे बेसी थाए कोन लिपिड्स लिवर आ मसल रे भी किछि किछि अमाउंट रो थाए सो दीज आर द रीजन्स वेयर द लिपिड्स आर प्रेजेंट इन द फिश मेनली द बेली फ्लैप head liver and muscles okay so what are different types of lipids are present so these lipids are triglycerides okay triglycerides रहुची sterol रहुची generally the cholesterol phospholipids so these lipids are rich in the fishes okay so there are various types of fishes
according to the fat content. Fat content kete achi se upare ta upare base kari there are various fishes. So based on the content of fats, fish can be classified into four main groups. Okay, charta main group re classify kara heichi. Lean fish. Lean fish mane, see the last paragraph, lipids ro last paragraph ta. Lean fish, LEAN, lean fish. So which has the minimum amount of fat. जोटी बहुत कम फैट थाए जो फिश रे हमें ताको लीन फिश कह जाए काहे कि जनरली से माने पतला थांती. ओके, केते थाए तांको भितर फैट कंटेंट इज लेस देन 2%. जेतले फैट कंटेंट लेस देन 2% रहइबो ताको कह जाए लीन फिश. सिमिलरली लो फैट फिश का कहबा जेतले 2 to 4%, 2 to 4% जदि फैट रहइबो ताको कहबो लो फैट फिश. मीडियम फैट फिश if it is 4 to 8%, 4 to 8% जदि फैट रहइबो that is known as medium fat fish, and if it is more than 8% ताको कहबो high fat fish. So according to the fat content, the fish are divided into four types, and this variation in the fat content it is varies from species to species. ସବୁ species ର ଆମର fat content will vary. So fat content ରେ generally कौन रहुची, mainly triglycerides and phospholipids and cholesterol or sterols. So what is the component of this fat? Fat टा कोथरे तयारी generally आमे जले fat digest होचे हम body रे lipid. After the digestion, what are the end products of fats? Fatty acid, हाँ, carbon dioxide, fatty acid and glycerol. glycerol and fatty acid. Okay, तो fat जेतले digest होचे हम digestive system रे, तो after the fat digest जेमति protein digest हेले amino acids बाहरची, carbohydrate digestion हेले monomer कण glucose, fructose, galactose एगुडा बाहरची. Similarly जेतले fat digestion होचे हम body रे सेटू कोन बाहरची glycerol and fatty acids. ओके, तो ग्लिसरॉल आ फैटी एसिड रे तयारी हेची कोन सब फैट मॉलिक्यूल. ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल हो कि फॉस्फोलिपिड्स हो कि कोलेस्टेरॉल हो, सेगुडा कोथरे तयारी सब फैटी एसिड and glycerol. So what are different types of fatty acids? Like linolenic acid. See here, linolenic acid. This is a fatty acid containing 18 number of carbon. ଆଉ ଏଠି double bond ତିନିଟା ରହୁଛି. Unsaturated fatty acid ଏଟା. Okay, similarly these are various types of fatty acids which are major components of lipids of the fish. And these omega-3 fatty acids, they are the major components of the fish. Fish re basic kon rohuchi omega-3 fatty acids. Okay, and these omega-3 fatty acids are present in several species, and there are two types of omega-3 fatty acids, EPA and DHA. Okay, EPA kon and DHA kon dekho. EPA is eicosapentaenoic acid and DHA is docosahexaenoic acid. एगुडा कोन दीटा फैटी एसिड. ओके, देखो स्ट्रक्चर एठी eicosapentaenoic acid and docosahexaenoic acid एगुडा कोन दीटा फैटी एसिड. एई दीटा फैटी एसिड बेसी रहउची omega 3 fatty acid type रे. ओके, so this EPA and DHA concentration of EPA and DHA in different fishes are showed in the table number 9.8. Like common carp रे EPA केते रहउची 0.2 gram in 100 gram of edible part. DHA रहउची 0.1 gram in 100 gram of edible part. Similarly एटी different fish रहिची आ तार EPA content केते अछि आ DHA content केते अछि तार गोटे डाटा जे देखिछि in 9.8 table. Okay, so what is the importance of this omega-3 fatty acid? This omega-3 fatty acid, it is not synthesized by the human body, so it is a essential fatty acid. Okay, so the omega-3 fatty acids, they are not synthesized in the human body, so they have to take from the outside. तो एठी outside ରୁ ସେମାନେ ନଉଛନ୍ତି, ଆଉ generally କୋଉଠୁ ନଉଛନ୍ତି? These fish are the
major source of this omega-3 fatty acids. That's why this omega-3 fatty acid is known as the essential fatty acid. Okay. Table number 9.9. This is the fractional composition of non-protein nitrogen compounds in the marine fish and shellfish. Non-protein nitrogen compound माने कौन? Non-protein nitrogen compound. Okay, so you know the amino acids. How many number of amino acids are there? केतुरा amino acid अछि जानिचो? Protein synthesis रे केतना amino acid help करछि? Standard amino acid सुनिचो? Standard amino acid. So there are 20 standard amino acids. Okay, जोटा कि our protein synthesis time रे help. So 20 standard amino acids they helps in the protein synthesis जोटा कि कहा जाए proteinaceous amino acid. तो ताकू छाड़ी कि आहुरी भी 300 amino acid आम सेल भितर अछि जोटा कि हमर प्रोटीन सिंथेसिस रे हेल्प करूनी. तो ताकू कोन कहा जाए नॉन प्रोटीन एमिनो एसिड. तो सेथिरे भी नाइट्रोजन रहउची कहा जाउची non protein nitrogen compound. So what are different amino acids that is not present in the protein? So there are various amino acids, peptides, nucleosides, nucleotide nucleosides रे भी नाइट्रोजन कंटेंट रहउची. तो आमे जदि नाइट्रोजन कंटेंट जदि मापिबा आमे प्रोटीन नो जो नाइट्रोजन सेटा भी आसीबो जो एमिनो एसिड प्रोटीन रे इन्वॉल्व होनी सही नाइट्रोजन भी आसीबो किछि किछि न्यूक्लियोटाइड्स रे नाइट्रोजन अछि सेटा भी आसीबो. Okay, so these are different types of different source of non protein nitrogen compound in different fishes. Okay, this table 9.9. Next, coming to the vitamins. The fishes are also rich in vitamins. Okay, these fish and shellfishes, they are also good source of vitamins. These vitamins are divided into two types. Okay, water soluble vitamins and fat soluble vitamins. जानचोटी दी टाइप रो विटामिन थाए वाटर soluble and fat soluble. What are the water soluble vitamins? Vitamin C and vitamin B complex. They are the water soluble vitamin. माने जो vitamin water रे soluble हबो ताकू water soluble vitamin को होची माने they are hydrophilic in nature, water loving in nature. जो vitamin water रे dissolve होनी water soluble न होई कि fat रे soluble हबो सेडा कहा जाय fat soluble vitamin जोडा कि होची hydrophobic in nature. So generally vitamin C and vitamin B complex they are water soluble vitamin and fat soluble vitamins are vitamin A, D and E and K. A, D, A, D ଆଉ E K vitamins देखोड़ा सेगुड़ा होची fat soluble vitamins. तो एई सब vitamins कोठु produce हुए fish रू. Okay, so vitamin A, vitamin D, vitamin E are the major soluble fat soluble vitamins that is produced by the uh, fishes. So fishes रे को vitamin बेसी थाए vitamin A, vitamin D, vitamin E. So these are the three major vitamins that is present in the fish body. From the fish रू हमें एई तीनिटा बेसी ही vitamins हमें पाऊ. Okay, so this 9.10 table, this is the vitamin content of various types of fishes showed. Okay, that this is the white fin fish, fatty fin fish, crustaceans, mollusk. So different content of the vitamin A, D, E, vitamin B1 to B12, then vitamin C. For 100 gram of fish, good 100 gram fish रे केते mg रो vitamin सब अछि. Vitamin बहुत lower content रे थाए तेणु आमे एठी ग्राम रे नउने कोन नउचे mg, that is milligram. गोटे ग्राम केते मिलीग्राम गोटे ग्राम टा केते मिलीग्राम 1000 1000 मिलीग्राम. तो आमे एठी तेणु विटामिन जेतु लो कंटेंट रे थाए तो आमे तारो एठी यूनिट टा कोन नोचे mg. So these are different milligram of vitamins that is present per 100 gram of fish of different type, crustaceans, mollusk, fatty fin fish and white fin fish. Next, coming to the minerals. Okay, so these fishes are also rich in various types of
minerals like your potassium, sodium, एगुड़ा कौन minerals रे आसुची जोड़ा होची macro elements. Sodium, potassium, magnesium, calcium, iron, zinc, copper, selenium, chromium, molybdenum. So these are iodine. These are different types of minerals that is present in the fish. Fish रे गुड़ा होची different types of mineral. तो आमे fish जति खाऊचे हमको एई सब mineral आम body को दरकार माने मिलुची. हमको मध्य एई mineral दरकार for various purpose like iron. Iron हमको कौन पे दरकार? Why we need iron? Formation of blood. Blood. Formation of hemoglobin. Our hemoglobin no major component होची iron. तेणु we need iron from outside. तो iron हमको मध्य fish रू मिलुची. So these are different types of minerals present in the fish. Okay. So this is the data showing different types of minerals present in the finfish and shellfish. Table number 9.11. See white finfish. So different types of mineral that is in sodium. Sodium is 50 to 150 mg per 100 gram of fish. आमे जदि 100 gram of fish खाइबा सेतरु हमकु केते सोडियम मिनरल्स मिलुची 50 to 150 mg. Similarly potassium मिलुची 200 to 500 mg. तो एई भलिया different fish रो different mineral concentration अलगा अलगा अछि. Okay. So this is all about the nutritive value of the fish. तो fish रे कौन कौन nutrition रहउची आउ केते केते constituent रो रहउची. Okay, mainly बेसी अछि moisture, then coming to the protein, then lipids, then vitamins, minerals, as then your carbohydrates. Okay. Next coming to the changes after the death of fish. So when a fish is dying, आमे जेतले माछ धरुचे पानी रु जेतले बाहर जाउची fish किछि टाइम भितर से मरि जाउची कारण पानी बिना से रेस्पिरेशन करि परिबोनी कारण तार रेस्पिरेटरी ऑर्गन होची गिल्स आ गिल्स केवल पानी रे थिले ही रेस्पिरेशन करि परिबो डिजोल्व ऑक्सीजन ओके गेज हां डिजोल्व ऑक्सीजन से केवल पानी रु नै परिबो गिल्स तार मेकानिज्म एम्ति अछि से पानी रु ही ऑक्सीजन टा को नै परिबो से एटमॉस्फेयर रु डायरेक्ट ऑक्सीजन नै परिबो नाही तो जेतले हमें माछ धरि की बिकिया पई नौचे तो इन बिटवीन तार डेथ हे जाउची तो ता बॉडी रे आफ्टर डेथ कौन कौन चेंज सब होची हाउ इज द चेंज ऑकर्स आफ्टर द डेथ ऑफ द फिश सो व्हेन आमे गोटे फिश को जेतले धरुचे देयर आर 4 फेजेस तार चारटा फेज रहउची आफ्टर द डेथ तो फर्स्ट फेज इज hyperamia phase number 1 that is hyperamia phase number 2 is rigor motive is the second stage after the death okay जेतले फिश टा मरी जाउची तार कोन कोन बॉडी रे डेथ होची okay then phase 3 is autolysis then fourth phase is bacterial spoilage okay आमे जो माछोटा खराब हे जाउची खाउने सेटा कोन फिश रो स्पॉइलेज हे जाय थाए जनरली जेतले स्पॉइल फिश टा को आमे केमति जानिबा स्पॉइल फिश को आमे जदि छुइबा सेटा पूरा हमको सॉफ्ट लागिवो ओके तो सेटा को आमे स्पॉइल फिश कहबा स्पॉइलेज केते बेले कहबा जेतले बैक्टीरियल कंटामिनेशन पूरा हे जिवो फिश रे सेई टाइम रे आमे स्पॉइलेज फिश ताको कहबा तो फिश ता जेतले स्पॉइल होउची आफ्टर द डेथ पूर्वरु फिश स्पॉइलेज हुएनी डेथ परे ही स्पॉइलेज हुए तो स्पॉइलेज ता होउची से डिफरेंट फेज रे क्रॉस करी करी जाई की होउची फेज 1 after the death is phase 1 which is known as hyperemia phase 2 is rigor motives phase 3 is autolysis and fourth phase is bacterial spoilage so what is hyperemia kono the secretion of mucus so just after the death so postmortem means just after the death this figure 9.4 this is the schematic representation of postmortem changes occurring phase wise in 4 stages चारटा स्टेज रे कोन कोन चेंजेस होनी तो हाइपरएरेमिया कोन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ व्हाट म्यूकस इन देयर बॉडी ओके सो फर्स्ट देयर इज सिक्रेशन ऑफ म्यूकस ऑन द बॉडी सरफेस तांको बॉडी सरफेस रे म्यूकस सिक्रेशन हो जोटा कि हमको छुइले लालुआ लालुआ लागिवो से म्यूकस ता कोन किछि किछि तारो सरफेस रे सेल्स थाए जो सेल्स माने म्यूकस सिक्रेट करंती हमर भी बॉडी रे सेल्स अछि जे कि म्यूकस सिक्रेशन करछि सिमिलरली फिश रे किछि किछि सेल्स रहउछि जे कि म्यूकस सिक्रेशन करछि आ से म्यूकस सिक्रेशन करिवा द्वारा हमकु तार सरफेस बॉडी रो सरफेस ता टिके स्लाइम लागुछि टिके लालुआ लालुआ लागुछि सेही फेज ता को कहा जाय हाइपरएमिया ओके
କୋଉ ସେଲ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରୁଛି ଏଇ म्यूकस? द गोबलेट सेल, क्लॉफ सेल्स एंड सैकिफॉर्म सेल्स ऑफ द स्किन. स्किन रे तार किछि सेल्स अछि जो सेल्स को कोड होची गोबलेट सेल्स, क्लॉफ सेल्स और सैकिफॉर्म सेल्स. So these cells they produce the mucus just after the death. डेथ परे पर जेतेले तार सब ऑर्गन फेलर हो जाउची एई सेल्स गुडा म्यूकस सिक्रेशन करबा स्टार्ट करंती जोटा कि हमको छुईले स्लाइमी लागे लालुआ लागे तो सेई कंडीशन टा कुआ जाय हाइपरेमिया. Then after the hyperemia then comes the rigor motive phase. Rigor motive phase कोन? So this is the event after the hyperemia. Hyperemia pore just आसीबो rigor motive phase. So this is the phenomenon of stiffening of the fish of the body of the fish. Okay, सेटा परे कोन होची तार body starts stiffening माने hard एबे हबो. ओके, जेतले हार्ड हबो सेई कंडीशन टा को जाउची रिगर मोटिव फेज. जो फेज रे हमें माछटा को किनि गाणु खाया पई सेते बेले जाय फिश रो स्पॉइलेज हेई न थाए. हमें तले माछ किनिया को जाउचे ता कोन चेक करूचे छुई की जदि सॉफ्ट लागुची माने हमें से माछ आनुने. सॉफ्ट लागुची माने ऑलरेडी तार स्पॉइलेज स्टार्ट हे जाईची. जदि माछटा हार्ड लागुची सेई कंडीशन टा को जाय कोन रिगर मोटिव. सेई फेज रे भी हमें माछटा को किनि काणु पुणी आम जीवंता माछ किणी आणु माछटा मरला पर ही आम किणी आणु खाया पाई. तो कौ फेज रे थिले आम ताको किणिबु रिगर मोटिव फेज रे. व्हाट इज रिगर मोटिव फेज? सो दिस इज द फेनोमेनन ऑफ स्टिफेनिंग ऑफ द फिश बॉडी. फिश रो बॉडी टा हार्ड हे जिवो फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर द डेथ. जस्ट मरिबार किछि टाइम परे तार बॉडी स्टिफेन हे जाय और हार्ड हे जाय तो सेही कंडीशन तो कुआ जाय रिगर मोटिव फेज. काहे कि हुए? Because in the rigor motive phase occurs because the just after the death the muscles are relaxed. The muscles of the fish are relaxed. सेति माई ए rigor motive phase ता आसे तार बॉडी स्टिफेनिंग हे जाय. ओके, तो फर्स्ट ए rigor motive phase रा तीनटा फेज अछि. प्री rigor motive, rigor motive and post rigor motive. What is pre rigor motive? The pre rigor motive कोन? फर्स्ट जेतले डेथ हबो फर्स्ट तार बॉडी रो टिश्यू टा टिके सॉफ्ट हबो. सॉफ्ट रु पुनी हार्ड हबो देन हार्ड रु पुनी सॉफ्ट हबो. सो जस्ट आफ्टर डेथ जेतले टिके सॉफ्ट होजी ताको कहै जाय प्री रिगर मोटिव. ओके, देन व्हेन इट स्टिफेन्स जेतले हार्ड हे जिवो ताको रिगर मोटिव फेज कहै होची. जेतले रिगर मोटिव फेज क्रॉस करजी पुनी किछि टाइम परे पुनी अगेन ता बॉडी र मसल्स गुडा अगेन it becomes soft. सेटा को जाय post rigor motive. So these are the rigor motive stage where the tissue becomes hard in the after the death of the fish. Okay, then third phase is autolysis. Autolysis phase comes after the rigor motive phase. Autolysis रे कोन होची? This is the process of fish tissues breakdown by its own enzymes or simply it is called self digestion. So after the rigor motive phase stops say phase गला परे एबे कोन तार टिश्यू सॉफ्ट हेबा स्टार्ट करिवो. तो टिश्यू सॉफ्ट हेबा स्टार्ट करछि सेई टाइम रे निजर ही किछि एंजाइम फिश रो निजर ही किछि एंजाइम से माने ही सेल्स को दे स्टार्ट डिग्रेडिंग द सेल्स. सेल रो जो प्रोटीन अछि कार्बोहाइड्रेट अछि तार फैट मॉलिक्यूल अछि ताको डिग्रेड करिया स्टार्ट करि दियंती. Autolysis माने सेल्फ ब्रेकडाउन. ऑटो मीन्स सेल्फ, लाइसिस मीन्स ब्रेकडाउन. सो तो निजर सेल आउ टिश्यू को से माने ब्रेक करबा स्टार्ट करंदी. कोन? किछि एंजाइम्स दैट इज प्रेजेंट इन द फिश. ओके, सो कोन अछि ब्रेकडाउन होची? द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द टिश्यू सच एज प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड एगुडा कोन तार बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द सेल्स. एगुडा कोन हबो? दे स्टार्ट डिग्रेडिंग. सेगुडा डिग्रेड हेबा स्टार्ट करिवे बाय वेरियस एंजाइम्स इन द बॉडी ऑफ द फिश. ओके, जेतेबेले डेथ हे जाउची. देन आफ्टर द ऑटोलाइसिस फेज देन कम्स द व्हिच फेज? बैक्टीरियल स्पॉइलेज. जेतेबेले सबु तार एंजाइम गुडा तार निजर मॉलिक्यूल्स प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट को डिग्रेड करिया स्टार्ट करिवो सेतेबेले ता भितरे बैक्टीरियल एबे ग्रोथ हबो. जेतेबेले बैक्टीरियल ग्रोथ ता भितरे बहुत हबो सेतेबेले फिश ता स्पॉइल हे जिवो. जेतेबेले स्पॉइलेज हे जिवो वी कैन नॉट ईट द फिश. आउ से फिश को खाई हबनी. ओके, जोटा कि हमें खाइबा जदी हमकु इनडाइजेशन हबो, बांती हबो, ए सब डिजीज
habo. So what is fish for bacterial spoilage? So when this in the living state of the fish, its body surface, gills and intestine are located in the large population of bacteria. Okay, so this when this autolysis starts, that leads to growth of various bacteria on the gill. Mainly start हुए कोउटी basic growth first gill रे start हुए. Okay, then the flesh part of the fish. तो bacteria भी start करिवो grow होबो को part रे major parts like gills तार flesh. Okay, different organs internal organ रे तारो bacterial growth start करिवो. जेतले bacterial growth start करिवो सेही condition टाକୁ कुहा जाए bacterial spoilage of the fish. आमे food spoilage का कहबे जेतले food ता आमे spoil हेछि बोली केतले कहबा जेतले सेठी bacterial growth हे जाइतिबो से food टाକୁ आमे spoil food कहबा. Similarly जेतले fish रो autolysis process हे जिवो तापरे सेतरे bacteria start करिवे growth करबा से ताटू fish रो खाद्य नै कि से माने तांको number सेठी grow करेबे. जेतले bacteria number will increase in the fish, that condition is known as bacterial spoilage. So these are different phases of fish after their death. Death ପରେ ସେ କେମିତି ଚାରଟା phase ରେ cross କରୁଛି. Okay, so this is about the different phases of fish according after the death of the fish. ବୁଝିହେଲା? Everyone understood? We'll move to the Ma'am, next unit. जो पोस्टमार्टम बायोकेमिकल चेंजेस से स्ट्रक्चर टा टिके बुझेई देंतु. Postmortem Biochemical changes highlighting active metabolism. Page number 25. 25. এইটা 25. Changes after death of fish. Changes after death of fish. हाँ. अच्छा এই stages গুড়া Yes ma'am. বুঝি পারলনি? আরে ଯୋଉଠି ବୁଝି ପାରୁନ ଯୋଉ step ରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପଚାରିବ ମତେ ପୁଣି ମୂଳରୁ start କରିବାକୁ ପଡିବ. ଯୋଉ step ରେ କୋଉ step ଟା ବୁଝି ପାରଲନି? जो anaerobic pathway तापरे ए जो कोन जहा हो ମୁଁ କିଛି ବୁଝି ପାରନି. আচ্ছা এটা তো 9.5 figure postmortem biochemical changes highlighting ATP metabolism. ATP metabolism କେମିତି ହୋଉଛି ତୁମର? ATP metabolism माने ATP केमिति synthesis होଉଛି ଆଉ केमिति break down होଉଛି. Metabolism माने कोन? Both catabolism and anabolism. ओके माने ATP केमिति बनुची ଆଉ ATP केमिति break down होଉଛି in different biochemical changes. Postmortem माने after death तार biochemical changes केमिति होଉଛି so that there is metabolism of ATP. जे जेमिति आम बॉडी रे मेटाबॉलिज्म होଉଛି सेमति सिमिलरली सेही मेटाबॉलिज्म. सी ग्लाइकोजेन. ग्लाइकोजेन टा कोन? This is a carbohydrate. Glycogen टा carbohydrate जानछो तो? That is the carbohydrate, stored carbohydrate in case of animal tissue. Plant tissue रे stored carbohydrate कोन अछि? Plant tissue. Plant tissue रे को carbohydrate अछि? Starch. Starch. तो जेमिति plant रे carbohydrate अछि सेमति animal रे glycogen. Okay, तो glycogen भांगिले सेटु कोन बाहरिबो? Glycogen is a polymer of glucose, D-glucose. तो glycogen तले भांगिबो सेटु बनिबो glucose. तो glucose जदि anaerobic respiration ने जिवो, anaerobic respiration माने without oxygen. Without oxygen. तो without oxygen जदि respiration हैला तो तार end product कोन सेटु बाहरिबो? Lactate, lactic acid. Okay, तो lactic acid सेटु बाहरिबो. जदि aerobic respiration गला, aerobic respiration माने कोन? एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस पूरा कोन हुए? ग्लूकोज भांगी की कार्बन डाइऑक्साइड वाटर आउ एटीपी बाहरिबो. एटीपी एनर्जी. तो से स्टेप गुडा केमिति होची? फर्स्ट ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस हबो. ग्लाइकोलाइसिस परे क्रेब साइकिल परे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. ट्रांसपोर्ट ए सिस्टम. तीनटा हां तो ए तीनटा सिस्टम परे देयर इज सिंथेसिस ऑफ एटीपी. तो सेइटा ही एठी देखैछि जदि ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन हे कि एनारोबिक पाथवे रे गला लैक्टेट बाहरिबो. एरोबिक पाथवे रे गले
सेठू पायरुविक एसिड बाहरिबो आउ सेठू बनिबो एटीपी एटीपी कोठू बनुची एएमपी रु बनुची एएमपी हला एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट जोटा कि फॉस्फेट सहित मिसुची जेतेले दैट फॉर्म्स एडीपी एंड एडीपी जेतेले पुनी आ गोटे फॉस्फेट सहित मिसुची दैट फॉर्म्स एडीपी एटीपी प्लस पीआई जो हाँ पीआई हाँ सेटा होता एएमपी प्लस पीआई इक्वल टू एडीपी एडीपी प्लस पीआई एडीपी इक्वल टू प्लस एटीपी पीआई इक्वल टू एटीपी सिमिलरली एटीपी जेतेले ब्रेक डाउन हबो एटीपी रु गोटे पीआई बाहरी गले एडीपी बनिबो एडीपी रु आ गोटे पीआई बाहरी गले एएमपी बनिबो एमपी हबो okay so this is similarly the proteins and lipids तांको मेटाबॉलिज्म जेतेले होउची सेठू एटीपी बाहरुची आ एटीपी पुनी अगेन यूटिलाइज कोथरे होउची वेरियस प्रोसेसेस हम बॉडी रो एटीपी रो रिक्वायरमेंट कोन जति हम बॉडी रो सब फंक्शन होउची एनर्जी दउची माइटोकॉन्ड्रिया हां संचित होई एटीपी रहउची सब सो माइटोकॉन्ड्रिया रे एटीपी बनुची कोठी बनुची माइटोकॉन्ड्रिया रो ए जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन टा कोठी अछि माइटोकॉन्ड्रिया भीतर अछि आमे जो कहूचे माइटोकॉन्ड्रिया पावर माइटोकॉन्ड्रिया इज द क्रिस्टाल पावर हाउस ऑफ सेल सेठू एटीपी बनुची क्रिस्टाल हां जो एटीपी बनुची कोठी से जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन टा अछि इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया दीटा मेम्ब्रेन अछि इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन तो इनर मेम्ब्रेन रहउची इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ओके जोटा कि हमर एटीपी सिंथेसिस करूची ओके तो एठी देखैछि कि जस्ट कि एटीपी केमिति सिंथेसिस होउची आ एटीपी केमिति ब्रेक डाउन होउची ओके फॉस्फेट सहित मिसिकी माने पीआई सहित मिसिकी केमिति एएमपी रु एडीपी होउची एडीपी रु एटीपी होउची सिमिलरली एटीपी भांगिले एडीपी बाहरिबो एडीपी भांगिले एएमपी बाहरिबो ओके जोटी कि हमको सब एनर्जी प्रोवाइड करची टू डू वेरियस टाइप्स ऑफ वर्क ओके तापर को मैडम गोटे एक्चुअली देखो आईएनटी तुमरे चेंजेस तुमरे एठी जा गोटे मिनिट सुनो मो कथाटा सुनो एठी एठी जहां भी तुमरे देइची नोट्स रे धर तुमरे पडला चेंजेस आफ्टर डेथ ऑफ फिश बट जो एग्जाम रे पडला व्हाट आर द चेंजेस occurs in the fish after death ओके तुम ए चारटा स्टेप को भल से एक्सप्लेन करिवो ए जो जिंसटा अछि पोस्टमार्टम बायोकेमिकल चेंज एटा सेठी लिखिबा दरकार नाही तुमर ए जो नोट्स गुडा देइछि एठी अलगा माने अलगा अलगा जिंस बहुत अछि तमे एग्जाम रे सब लिखिबाटा पॉसिबल नुह सब लिखिले गोटे क्वेश्चन लिखुथबो टाइम सर जीवो तमरो एग्जाम केते टाइम हुए 3 घंटा ना यस मैडम मेन इंपोर्टेंट पॉइंट वाला मैडम खाली जहां हमें लिखिबो हां सेति पई मु ए जिंसटा स्किप कली कहिलिनी एटा दरकार ही अच्छा नाही अच्छा बुझिला एटा खाली जानिया पई हमकु दिया है जाइछि बोधे हां ओके मैम okay we'll move to unit 10 यस मैम केते टाइम हेलानी 7:30 7:30 okay next unit coming to the nutrition of aquatic animals आमे पूर्व यूनिट रे पढिले हमकु फिश रु कोन न्यूट्रिशन हमकु मिलुची एबे आमे पढिबा फिश को आमे कोन न्यूट्रिशन देबा जहा फळे तांकर प्रॉपर ग्रोथ आउ डेवलपमेंट हबो बुझला से माने प्रॉपर्ली ग्रो करिवे माने आमे फिश को कोन फूड प्रोवाइड करिवा जहा फळे तांकर प्रॉपर ग्रोथ डेवलपमेंट आमे जो फीडिंग करूचे गोटे प्रोसेस फीड रो ए एक्वाकल्चर रो गोटे प्रोसेस होची फिश फीडिंग तो से फीडिंग रे आमे कोन कोन इंपोर्टेंट पॉइंट्स आमे नजर रे रखी कि ताकू आमे फीडिंग करिया फिश को सो दैट देयर विल बी बेटर ग्रोथ and better development of the fish so what are the nutrition of the fish okay so what are the requirements of different types of nutrients for commercially important fin fish and shellfish so you know there are two types of fishes broadly dita type of fish fish को dita type रे categorize करा है fin fish and shellfish fin fish माने जति की fish रो fins थाए ताको हम fin fish कहउची जनरली हमें जति की fish खाऊ समस्तंकर fish fin थाए आ shellfish कोन जहार सेल थाए चारिपटे जेमिति कि तमरो गेंडा हला म्यूसेल्स एगुडा कोन ता चारिपटे सेल्स अछि तो सेगुडा आछि shellfish रे मैडम ओके टॉर्टोइस हबो की टॉर्टोइस tortoise that is a ये reptile ना tortoise अच्छा अच्छा सेटा that is a हबो reptile that is not a fish okay ओके that is मैडम an edible reptile
फिश रे आछि कि टर्टल कोथरे आछि रेप्टाइल रे आछि ना क्रीपिंग एनिमल्स okay, so requirements of different nutrients. Next coming to the nutritional requirement of proteins. Okay, तो ताकू हमें प्रोटीन कौन कौन खाइबा को देबा कौन कौन प्रोटीन रिक्वायरमेंट अछि सो दे हा आमे जेहेतु कौन जानले आमे तले फिश रे खाउची मेजर कंपोनेंट तार कौन रहउची प्रोटीन रहउची फिश रो बॉडी रे मेजर कंपोनेंट कौन रहउची प्रोटीन तो से प्रोटीन तांकर जो फिश रो फ्लेश रे बनुची तार मीट पोर्शन रे बनुची से प्रोटीन आसीबो कोडू आमे तांको खाइबा को देले ही से सेइठू ही एमिनो एसिड नै कि सेइठू प्रोटीन बनेबे राइट किछि किछि तांको बॉडी रे निजे सिंथेसिस हबो जोटा कि कुआ जाउची नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स आ एसेंशियल एमिनो एसिड्स आमे तांको बाहरु ही देले से प्रोटीन तांको मसल्स रे से बनेइबे तो प्रोटीन मस्ट बी रिक्वायर्ड इन द फूड तांको फूड रे प्रोटीन कंटेंट रहिबा दरकार कारण तांको बॉडी रे बेसी प्रोटीन सी रहउची okay so there are about 40 essential nutrients that is required for the fish growth and development first is 10 amino acids 10 ta amino acids essential amino acids 11 water soluble vitamins okay water soluble vitamins हमको खुया को पड़िबो तांको जोटा कि 11 in number 4 fat soluble vitamins 5 essential fatty acids and minerals and like some other components so these are different types of nutrients we have to feed to the finfish and shellfish for their nutrition so that there will be proper growth of the fish so nutritional requirement of the protein so protein ର requirement कौन अछि तांकर proper growth हबो muscle growth केमिति हबो तुमे जो माने जिम जाउचनी तांकर मसल ग्रोथ पई जिम ट्रेनर कोन कुए बेसी प्रोटीन खाओ ओके तो जनरली प्रोटीन ता हमर मसल ग्रोथ करिवारे हेल्प करे सेमिति हमें फिश रो हमें हमको कौन दरकार फिश रो साइज बड़ हेले मसल अधिक हेले हमको बेसी फिश रो मीट मिलिबो तो सेही बेले हमें ताको प्रोटीन फीड करले ही तांकर मसल ग्रोथ हबो तो प्रोटीन्स आर द मेजर कंपोनेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ देयर फ्लेश तांको फ्लेश रो डेवलपमेंट रे हमको बेसी तांको प्रोटीन खोया को पड़िबो okay so these proteins are made up of amino acids and they are the major building blocks of the flesh or meat part of the organisms okay which are digested into various types of dipeptides tripeptides and amino acids by our digestive system मैम आमे जो चाष करछे माछ सेमान को हमें देबे बाहरु प्रोटीन जो माने नेचुरल एनवायरनमेंट रे रहउचंती से एते प्रोटीन कोड पाउचंती नेचुरल एनवायरनमेंट रे जो माने फिश बडुचन माने खाद्य खाउ नादी रिवर रे जो माने के तांको खाद्य कोन से नहीं मैम आमे जे चाष कला बेले 1 ईयर के से माने 1 केजी 2 केजी जाउछन किंतु नेचुरल रिसोर्सेस के से 1 केजी 2 केजी होबा पे 2-3 वर्ष कि 4 वर्ष लागुची टाइम हां तांकर सेडी तांको फूड कोन नेचुरल फूड तमे सब ये पढिथिबो फूड चेन रे गोटे पॉन्ड इकोसिस्टम रे कोन रहउची फर्स्ट फाइटोप्लैंक्टन जू प्लैंक्टन स्मॉल फिश लार्ज फिश ओके ओके तो से तांकर नेचुरल एनवायरनमेंट रो सेमान जो खाद्य खाउचंदी दैट इज नॉट सफिशिएंट सेति पई त हम एक्वाकल्चर करछे नले सेमान तो तांकर नेचुरल एनवायरनमेंट रे ग्रो होई कि हमें सेठु भी माछ सेही फिश रो टेस्ट अधिक भलो थाए बेसी रादर द हमें जोला फिश ग्रो करछे माने एक्वाकल्चर करी कि ताठू भलो टेस्ट काहर थाए जोला नेचुरल जोठी पढंती हां से माने जेमिति कि देसी कुकुडा और ब्रॉयलर कुकुडा डिफरेंस कोन ब्रॉयलर देसी कुकुडा रा टेस्ट भलो थाए काहे कि से माने तांकर नेचुरल एनवायरनमेंट रो से माने से पोको जको खाद्य खाई कि निजे तांकर ग्रोथ करेबे मसल रो किंतु आमे जो ब्रॉयलर ताकू आमे स्टेरॉइड हार्मोन देई देई ताकू आमे ता साइज बढ़ौचे तो ता टेस्ट वेरी हां तो सेही फिश रो डिफरेंस आसीबो विटामिन साउ प्रोटीन रो कंटेंट विल बी डिफरेंट ओके तो आमे जो एक्वाकल्चर करछे तार नेचुरल एनवायरनमेंट जो फिश बढ़ुची ताठू बेटर नुह आमे जो एक्वाकल्चर करी खाउचे किंतु आमे एक्वाकल्चर करूचे काहे कि जेतो हम पॉपुलेशन बढ़ुची पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होची टू मीट द डिमांड ऑफ फूड आमे फूड रो डिमांड को मीट करिया पई ही आमे ए सब प्रोसेस करछे एक्वाकल्चर ए ब्रॉयलर काहे कि आसला देसी कुकुडा जति कि अछि सब पॉपुलेशन को से प्रोवाइड करि परिबनी खाद्य सेति कि मीट चिकन प्रोवाइड करि परिबनी तेणु ब्रॉयलर आसला सेही भले आमे एक्वाकल्चर काहे करछे ए जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होची धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ुची
तांकर आमे फूड मीट केमिति करि परिबा हमको एक्स्ट्रा एफर्ट एक्स्ट्रा खाद्य बनेले ही आमे तांको फूड को आमे तांको नीड को आमे सप्लाई करि परिबा तेणु aquaculture प्रोसेस होची केमिति आमे बेसी रु बेसी प्रोडक्शन करि परिबा तो बेसी रु बेसी प्रोडक्शन कर सेति पय तो आमे ए जो ए पूर्व जो डिफरेंट प्रोसेस पड़ले ब्रीडिंग प्रोसेस हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस गाइनोजेनेसिस एंड्रोजेनेसिस ए प्रोसेस गुडा काहे कहूची एटा नेचुरल प्रोसेस नो आमे ताको करूचे जानि सुनी काहे करूची प्रोडक्शन को बढ़ेया पय टू नीड द फूड डिमांड ऑफ द एक्सप्लोजिंग पॉपुलेशन बुझेला ओके मैम okay so this size of the fish ro size will be depends upon the amount of protein ame kette तांको खाया को दोचे ता पर डिपेंड करिवो तो आमे एटा को नजर रे रखिबा कि आम माने जो फूड आमे तांको दोचे दैट मस्ट बी रिच इन protein so in general herbivorous species of fish जो fish उड़ा होती herbivorous like carps the protein requirement range is 27 to 45% protein by the dry weight okay see here in the ए जो पेज टा खोली एठी देखो गोटे डाटा अछि ओके कार्प herbivorous species of carp तार रिक्वायरमेंट केते प्रोटीन रो 27 रु 45% माने हमें जो खाद्य दोचे तांको खाइबा को से खाद्य रे 27 रु 45% प्रोटीन रहिबा कथा ओके माने धरो हमें 100 ग्राम रो खाद्य दोचे काकू से कार्प को सेतरे केते प्रोटीन रहिया कथा बाय वेट 27 रु 45 ग्राम प्रोटीन सेतरे रहिया कथा इफ इट इज अ carnivorous fish like eel catfish तांकर रिक्वायरमेंट केते 24 रु 50% ऑफ द ड्राई वेट ऑफ द फीड माने हमें खाद्य जति की दोचा तार 24 रु 50% हम सेतरे प्रोटीन देबा सिमिलरली omnivorous fish माने herbivorous fish माने और हर्बिवरस फिश ये माने देखो जो माने प्लांटन गुडा को भेजे खाइबे माने ये खाती छोटे छोटे शिउली वगैरह हाँ जो माने केवल वेजिटेरियन इन फाइटोप्लैंक्टन को नेचर खाउछनी माने प्लांट को खाली खाउछनी हाँ ओके तो वेजिटेरियन इन तांकर नेचर तांकर प्रोटीन कंटेंट केते 27 रु 45% हमें देबा को पड़ियो कार्निवोरस फिश सिमिलरली ओमनिवोरस फिश so समस्तंकर रेंज ऑफ प्रोटीन विल बी डिफरेंट ओके 28 to 50% okay so these are different concentration of proteins that is supplied through the food similarly nutrition requirement of lipids okay so lipids are also the major component of fish को जगह lipids बेसी थाए हमें पढ़िले को जगह रे belly portion head liver muscle लिवर तो है एई जगह सब बेसी लिपिड्स अछि तो आमे लिपिड्स भी सही मात्रा रे आमे तांको फीड रे देबा को पड़िबो सो दैट तांकर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलप होबो तो कोन लिपिड्स जनरली तांको बॉडी रे को लिपिड्स अछि देयर ग्लिसरॉल फैटी एसिड्स स्टीरोल्स phospholipids and several other derivatives of the lipids okay so some lipids which are present in their body are saturated lipids some are unsaturated saturated lipid माने जो lipid are made up of what fatty acid and glycerol जो fatty acid रे डबल बॉन्ड नाही ताको हमें कहबा saturated fatty acid जो लिपिड रे डबल बॉन्ड रहउची fatty acid कोन these are long chain hydrocarbon with one COOH group गोटे लास्ट रे COOH ग्रुप थिबो आमे एटी पढिथिले पूर्वरु फैटी एसिड स्ट्रक्चर सेगुडा कोन लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन थिबो आ लास्ट रे गोटे COH ग्रुप थिबो एटा कोन फैटी एसिड ओके तो से फैटी एसिड जो लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन दैट मे कंटेन डबल बॉन्ड दैट मे कंटेन सिंगल बॉन्ड तो जदी सब सिंगल बॉन्ड रहला ताको सैचुरेटेड फैटी एसिड कहया जाय जदी किछि सेत्र डबल बॉन्ड रहला ताको अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहया जाय so there are various types of lipids present in the fish like saturated lipid unsaturated जोडी saturated fatty acid रहइबो सेटा saturated lipid जोडा unsaturated fatty acid रहइबो सेटा unsaturated lipid okay so like omega 3 fatty acid can be produced in the fish भीतर सेटा प्रोड्यूस कोची जोटा कि हमकु समान डायटरी आम पई गोटे डायटरी सोर्स ओके तो एई जो सब लिपिड्स तांको बॉडी रे प्रोड्यूस हबो सेति पई वी हैव टू फीड देम आमे ताको लिपिड फीड करले ही तांको बॉडी रे लिपिड फॉर्मेशन किछि लिपिड तांकर बॉडी रे निजे प्रोड्यूस होउची जोटा कि कहआ जाउची नॉन एसेंशियल लिपिड्स
आउ किछि किछि लिपिड्स हमकु थ्रो फूड आमे तांको सप्लाई करिया को पड़िबो जोडा को जाउची एसेंशियल लिपिड्स. Okay, so there are two types कहली जरा saturated and non-saturated fatty acids. Okay, so the ratio of 20 is to 9. These are the polar lipids of liver tissue. This is sometimes used as the index for essential fatty acids. तो essential fatty acids केते अछि सेटा केमिति मपा जाय? That is the ratio of the polar lipids present in the liver. Liver रो ही polar lipid को से माने मापी कि सेरु जानती कि essential fatty acid, essential lipids केते अछि गोटे fish body रे. Okay, so the ratio value less than 4 is considered as satisfactory dietary condition. तो आमे proper diet, proper lipid गोटे fish को feed करूचे कि नहीं सेटा केमति जानिबा? आमे ता बॉडी रो लिपिड कंटेंट ही मापिबा. जनरली कोटा मपा जाए ता लिवर रो लिपिड. ता लिवर रे केते लिपिड अछि सेटा को आमे मापी कि जानि परिबा. जनरली को लिपिड मपा जाए ओमेगा 3 फैटी एसिड्स. तो आमे ताकू मापी कि जानि परिबा कि आमे प्रॉपर्ली ताकू लिपिड फीड करूचे कि नहीं. जदि तार कंसंट्रेशन कम आसुची ता बॉडी रे, ओके, तार कंसंट्रेशन जदि कम आसुची त माने आमे सेतिकी लिपिड तांको खाद्य रे आमे देई पारने जहा फळे तांकर लिपिड कंटेंट बॉडी सेतिकी रहुनी. तो सेही भले accordingly we can change the concentration of lipid in the feed. Okay, next is nutritional requirement of carbohydrate. Okay, carbohydrate सबुटु कम थाए फिश रे. Okay, तो we have to also give the carbohydrate in their जतिकी भी कम थाउ किंतु कार्बोहाइड्रेट अछि तांको बॉडी रे. सो सेहीटा बनिया पई हमकु भी कार्बोहाइड्रेट तांको फीड करिया को पड़िबो in the through the diet. Okay, so this utilization of carbohydrate in diet by the fin and shellfish is lower than the other terrestrial animals. Why? Because they mostly utilize the proteins and fats. तो तांकर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट प्रोटीन आउ फैट रु कम रहिबो. तो आमे जो फीड तांको करूचे खाद्य तांको दोचे सेथिरे दे मस्ट बी हैविंग लोअर अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट. मेनली कोन सेथिरे थिबो? इट मस्ट बी रिच इन द ग्लाइकोजेन. कार्बोहाइड्रेट आमे बेसी सेठी ग्लाइकोजेन रिच कंटेंट आमे देई परिबा. ओके, फिश को. So these are different nutritional component of requirement of the carbohydrate. एटी पढिबो सबु. Okay, it pura text ta padibo. Jemi the capacity of fish to utilize the carbohydrate diet varies from species to species. तो सबु species रो requirement of carbohydrate is not same. Like lipid और proteins, सबु species रो lipid protein similar नुए, utilization similarly carbohydrate is not also same. So according to the species, we have to give the carbohydrate feed. Okay, so for carp species जदि रोची which are herbivorous can readily utilize the maltose. आमे तांको maltose बेसी देबा. Okay, and polysaccharide they utilize the monosaccharide glucose and fructose. Carp fish जदि अछि आमे तांको monosaccharide बेसी फीड करबा. Glucose, fructose, galactose. Disaccharide rice, sucrose, maltose and polysaccharide like dextrin and starch. Okay, similarly another salmon fish can utilize glucose, sucrose, maltose, starch, dextrin. तो एई भला सबु फिश रो हमरो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट विल बी डिफरेंट. तो आमे तांकर बॉडी रो रिक्वायरमेंट हिसाब रे वी हैव टू फीड द कार्बोहाइड्रेट. आ से माने बेसी यूटिलाइज कोन करंती को मोनोसैकेराइड को डाइसैकेराइड आ को पॉलीसैकेराइड सेटा आमे देखि कि तांको फिश को फीड करिया. Then nutritional requirement of vitamins. Okay, so vitamins are also the major component of their body. हमको vitamins तांको किछि फीड करिया को पड़िबो आ तांको बॉडी रे किछि बनि थाए. जोटा बनि थाए that is non essential vitamins. जोटा बाहरु हमको सप्लाई करिया को पड़िबो that is essential vitamins. And these vitamins are two types हम पढिले, water soluble and fat soluble vitamins. Okay, so the vitamins which are soluble in fats are A, D, E, K, and vitamins which are soluble in water are B complex and vitamin C. Vitamin C is otherwise known as ascorbic acid. Okay, so these are two types of vitamins which is required by their body. Some are synthesized by itself by their body and some are taken from the diet. So the dietary requirement of vitamin in finfish and shellfish are like different. The requirement will be different.
fin fish ର requirement ଅଲଗା and cell fish ର requirement ଅଲଗା. Okay. Just like vitamin B1, which is otherwise known as thiamine, it exists as a coenzyme in the thiamine polyphosphate, which function as a vitamin ର କାମ କଣ generally most of the vitamins they act as the cofactor. ଆମ ବଡିରେ ବି ପ୍ଲସ୍ ଫିସ୍ ବଡିରେ ସବୁ ଭିଟାମିନ ର କାମ କଣ generally ସେମାନେ କୋଫ୍ୟାକ୍ଟର ଭଳିଆ କାମ କରନ୍ତି କାହାର ଭେରିୟସ୍ ଏନଜାଇମ୍ସ ଭେରିୟସ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଯଦି ସେ କୋଫ୍ୟାକ୍ଟର ସହିତ ବାଇଣ୍ଡ ହବ ତମେ ପଢିଥିବ ପ୍ରୋଟିନ୍ସ ରେ ଗୋଟେ ଏପୋପ୍ରୋଟିନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହୋଲୋ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଥାଏ. ଆପୋପ୍ରୋଟିନ୍ କଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ତାର କୋଫ୍ୟାକ୍ଟର ସହିତ ବାଉଣ୍ଡ ନ ହେଇଥିବ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଏପୋପ୍ରୋଟିନ୍ which is non active protein. ତାର କିଛି ଆକ୍ଟିଭିଟି ନଥାଏ. ଯେତେବେଳେ ସେ ତାର କୋଫ୍ୟାକ୍ଟର ସହିତ ବାଇଣ୍ଡ ହେଇଯିବ that becomes the hollow protein which is the functional protein. Okay, like enzymes apo enzyme hollow enzyme. ତ ଯେତେବେଳେ ତାର କୋଫ୍ୟାକ୍ଟର ସହିତ ସେ ବାଇଣ୍ଡ ହବ ସେତେବେଳେ ହିଁ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଆଉ ଏନଜାଇମ୍ ଗୁଡା ତାଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭିଟି ଆସିଯାଏ. ତ ଏଇ ଯୋଉ କୋଫ୍ୟାକ୍ଟର ଗୁଡା generally କଣ these are the vitamins. Vitamins are the major component of the cofactor of various types of proteins and enzymes. Like thiamine. Thiamine is the vitamin B1. So B1 they are the major component of what? They helps in the decarboxylation of pyruvate and alpha ketoglutarate. So କିଛି enzyme जो माने pyruvate ଆଉ alpha ketoglutarate रे decarboxylation करନ୍ତି. Decarboxylation माने removal of carbon dioxide. Okay, pyruvate ରୁ ଯଦି carbon dioxide release हବ that will form the lactic acid. So lactic acid formation pyruvate ଆଉ alpha ketoglutarate ର decarboxylation ରେ help करे thiamine vitamin B1 complex. Okay, similarly other vitamins. So the major challenge of loss of thiamine is 60 to 70% loss of vitamin B. যদি vitamin B1 যদি ନ ମିଳିବ body କୁ there is 60 to 70% loss in their body function. Okay, so this vitamin B1 in finfish and shellfish which ranges from 1 to 15 mg per kg. तो vitamin B1 ଆମେ କେତେ ଫିଡ୍ କରିବା ଯଦି it is a fin fish ତାହେଲେ 1 ରୁ 15 mg per kg of their kg of the feed. ଆମେ ଯଦି 1 kg ର ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଉଛେ ତାଙ୍କୁ ତାହେଲେ ସେଥିରେ vitamin B1 କେତେ ରହିବ 1 ରୁ 15 mg if it is a fin fish. If it is shellfish then 15 to 30 mg per kg of the feed. ଗୋଟେ kg food ରେ 15 ରୁ 30 mg ରହିବ ସେଠି vitamin B1 if it is a what? It is a shellfish. Okay, similarly vitamin B2. Vitamin B2 ର ବି ସେମିତି requirement ଅଲଗା. Finfish ର କେତେ 70 to 30 mg and shellfish ର 15 to 60 mg. ତ ଏଇ ଭଳିଆ ସବୁ vitamin ର requirement ଏଇଠି ଦେଇଛି. ତାକୁ ପଢିବା vitamin B3 ଯେମିତି vitamin B3 ର if it is a finfish that is 120 to 200 mg and if it is a shellfish that is 60 to 120 mg. So vitamin B6, vitamin 6 is 6 requirements here, vitamin B6, then biotin which is vitamin B7. तो समस्तଙ୍କର requirement ସବୁ vitamin ର ଅଲଗା ଅଲଗା requirement ରହିବ for the finfish and for the shellfish. ଯେମିତି କି vitamin C. See here vitamin C, then vitamin A, D, E, K. तो ସମସ୍ତଙ୍କର constituent ସମସ୍ତଙ୍କର composition will be different for different fish. It varies from finfish to shellfish. ଆଉ ସବୁ vitamin ର ଅଲଗା ଅଲଗା composition ରହିବ. ତ ଆମେ ଏଇ composition ହିସାବରେ ଆମେ ଯୋଉ food ବନଉଛେ fish ର ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ vitamin ଟା add କରିବା. Okay, so this is the vitamin requirement. Then vitamin requirements of minerals. Okay, so different minerals कौन minerals तांको growth ଆଉ reproduction ପାଇଁ ଦରକାର sodium, potassium, magnesium, calcium, phosphorus. So these are macro elements. Macro elements कौन जोड़ा अधिक amount रे दरकार अधिक amount रे कौन दरकार sodium, potassium, magnesium, calcium, iron एगुड़ा सब sorry magnesium, calcium, phosphorus एगुड़ा सब macro elements. और माइक्रो एलिमेंट्स जोटा कि हमको कम अमाउंट रे दरकार लाइक आयरन जिंक सेलेनियम कॉपर मैंगनीज आयोडीन
एगुड़ा सब हमको लेस अमाउंट रे दरकार सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स रिक्वायर्ड बाय द फिश बॉडी तो हमको खाद्य रे भी एतिकी मिनरल्स ऐड करिया को पड़िबो आमे एश्योर करिया को पड़िबो कि आमे जो खाद्य ताकू दोचे दे आल्सो कंटेन these different types of minerals okay like if it is calcium so calcium तांकर को पार्ट रे दरकार calcium is required for the development of what calcium कोठी बेसी थाए bone बोन आउ मसल्स रे बेसी कैल्शियम थाए बेसी थाए बोन रे ओके तांकर फंक्शन कोन कैल्शियम रो इट हेल्प्स इन द बोन फॉर्मेशन मसल कंट्रैक्शन रे कैल्शियम हेल्प करे कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स रे कैल्शियम हेल्प करे ओके इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट टाइम रे कैल्शियम हेल्प करे कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स से टाइम रे भी हेल्प करे ओके तेनु कैल्शियम मस्ट बी required calcium mineral must be required in their food okay so if it is a carp eel species then taro requirement of calcium is 0.35% 0.35% calcium in the diet if it is a tilapia fish then 0.7% catfish calcium percent is 0.45% so these are different calcium requirement by different types of fishes similarly phosphorus is the mineral तार रिक्वायरमेंट कोठी हबो फास्फोरस कोठी दरकार हमको फास्फोरस रिक्वायरमेंट कोठी अछि न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस माने डीएनए आरएनए रे सिंथेसिस रे हेल्प फास्फोरस सेतल कहली ना डीएनए रो चार्ज नेगेटिव काहे की सेठी फास्फोरस अछि फास्फेट PO4 माइनस अछि तेनु डीएनए रो चार्ज नेगेटिव तो मेनली न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस एनर्जी प्रोडक्शन सेल मेम्ब्रेन रे तार काम अछि मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट फैट्स एथिरे हेल्प करछि फास्फोरस ओके सिमिलरली फास्फोरस रे भी requirement will be different for different fish like Japanese eel रे तार requirement होची 0.29% catfish 0.8% Atlantic salmon 0.6% carp 0.5% तो एडा होची different requirement of phosphorus तो हमें फिश ऊपर डिपेंड करे कि ताकू हमें केते फास्फोरस फीड करबा इन द फूड सिमिलरली मैग्नीशियम कोठी काम करे को काम रे इट हेल्प्स इन द skeletal metabolism neuromuscular transmission it helps in the respiratory adaptation and it is helping in the osmoregulation so ei सब प्रोसेस रे मैग्नीशियम हेल्प करे फिश रे तो तार कंसंट्रेशन सेमती सिमिलर डिफरेंट फॉर डिफरेंट फिश ओके जेमिति कि तार कंसंट्रेशन इज 46 mg per liter केते 46 mg per liter is required for the magnesium is required for the fish okay similarly other minerals सब other minerals रो इठी सोडियम पोटेशियम तार कंसंट्रेशन केते रहिची एठी सब देखि दबो टेबल रे अछि टेबल नाही टेक्स्ट देखि दबो हला so these are different minerals requirement by the fish okay next is energy budget so energy is intake of fundamental nutritional basis requirement for the life process energy per se is not तो एनर्जी बजेट माने एनर्जी केमिति बनुची आ एनर्जी केमिति खर्च होची तांको डिफरेंट प्रोसेस रे एनर्जी खर्च होची माने एनर्जी रो कैटाबोलिज्म पार्ट एंड एनर्जी रो एनाबोलिज्म पार्ट ओके सो एनर्जी इज ऑब्टेन फ्रॉम द इंजेस्टेड फूड जो खाद्य हमें ताको खुएबा सेठू एनर्जी प्रोड्यूस होची आ एनर्जी इज ब्रेक डाउन इन द फॉर्म ऑफ एटीपी आ एनर्जी इज ब्रेक डाउन मैडम से पेज रे गोटे लिखा है गोटे सेंटेंस एनर्जी पॉप से सेटा कोन टिके गोटे सेकंड लाइन के एनर्जी पॉप से इज नॉट ए न्यूट्रिएंट energy per se is not a nutrient but acquired for metabolic oxidation of proteins तो एनर्जी टा कोन हम एटा गोटे न्यूट्रिएंट नो हम एनर्जी टा को खाद्य माने एनर्जी टा को खाउने ना एनर्जी टा तयारी होउछ हम बॉडी रे व्हिच इज एक्वायर्ड फ्रॉम द मेटाबॉलिक प्रोसेस दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ जेतला हमर कार्बोहाइड्रेट फैट आ प्रोटीन ऑक्सीडेशन होउची हमें सेइठो एनर्जी पाउचे आमे इनडायरेक्टली एनर्जी पाउचे काहटू कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट जोटा के हमें खाद्य रे खाउचे आमे एनर्जी को खाउने डायरेक्टली सो सेटा कहूची एनर्जी पर से इज नॉट ए न्यूट्रिएंट माने एनर्जी टा ए जो एनर्जी पॉक्स मींस एटा बुझी पॉक्स पर से तुमे ये नेट रे देखि दो पर से रो मीनिंग कोन
ए सेंटेंस रो माने होची एनर्जी इज नॉट ए न्यूट्रिएंट। केबे केबे इंग्लिश रे डिफरेंट वर्ड यूज होई थाए। ओके एटा सेमती गोटे वर्ड हे जाईची, ए वर्ड यूज हेची। तो यार माने एग्जैक्टली तो मु कहि पाउनी, टिके नेट रे देखि दबो परसे रो हम देखुची। जेमती आमे गोटे वर्ड यूज करछे आईई, ता माने कोन दैट इज। तो सेही भले परसे भी गोटे वर्ड माने तार मीनिंग कोन, ए सेंटेंस रो मीनिंग कोन माने आमे रो जी बाय बाय इटसेल्फ। हाँ बाय इटसेल्फ बोला जेमती आई दैट इज, सेमती परसे होची बाय इटसेल्फ माने एनर्जी बाय इटसेल्फ इज नॉट ए न्यूट्रिएंट। एबे बुझियला परसे को हम एटी पे लिखि परिबा एनर्जी बाय इटसेल्फ इज नॉट ए न्यूट्रिएंट। बुझियला साइंस पिला जनरली एते वर्ड को देखंदिनी, बुझिलो साइंस पिलांकर एते ग्रामर भलो हुएनी, इंग्लिश नॉलेज बेसी न थाए साइंस पिलांकर जनरली। बुझिला तो एनर्जी पर से माने बुझियला बे it itself is not a nutrient but is acquired from the metabolic process. Okay, metabolic process like breakdown of carbohydrate, lipid au protein. Energy आमे nutrient भलिया ताको खाउनु, आमे एटीपी खाउछु कि एनर्जी ता हमर कोन एटीपी, एटीपी ता आमे खाउछु, एटीपी ता हमर सिंथेसाइज होउची बॉडी रे। कोउट सिंथेसाइज होउची मेटाबॉलिक प्रोसेस रु। कोन मेटाबॉलिक प्रोसेस आमे जले कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन आउ फैट ऑक्सीडेशन प्रोसेस होउची ब्रेकडाउन होउची सेइटु ही एटीपी सिंथेसिस। जेंति हम एग्जांपल नेबा कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट ब्रेकडाउन होउची फर्स्ट पायरुविक एसिड रु, पायरुविक एसिड इज एंटरिंग इनटू क्रेब साइकिल, क्रेब साइकिल रु जो एनएडीएच एफएडीएच टू बाहरला सेटा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को जिवो, जोटी कि हमर एटीपी टा सिंथेसिस हबो इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो एति की प्रोसेस हला परे सेटु एटीपी सिंथेसाइज होउची फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट। तो सेटा एठी कहूची एनर्जी itself is not a nutrient but it is synthesized from the ingested food। आमे जो खाद्य खाइबा सेटु ही एनर्जी बाहरे। आउ एनर्जी हमर कोथरे काम रे आसे टू कैरी आउट वेरियस फंक्शंस। Okay, so the energy budget of the fish is represented by a simple formula। Okay, तो हमर एनर्जी बजेट माने तम बजेट माने कोन कंट्री रो बजेट बनउची, ता बजेट माने कोन बजेट रे हमर माने केते आमे रेवेन्यू जनरेट कले, ए जो बजेट सब इयरली बजेट होची कंट्री रो फाइनेंशियल बजेट, ता माने कोन आमे इयरली हमर केते रेवेन्यू जनरेट हैला माने कंट्री रो इनकम केते हला आ आमे केते एक्सपेंडिचर करिवा, सेटा होची बजेट। सिमिलरली हियर एनर्जी बजेट, तो आमे बॉडी रे फिश रो बॉडी हो कि आमो बॉडी हो कोनोसी भी एनिमल बॉडी केते एनर्जी बनिला आ केते एनर्जी डिफरेंट प्रोसेस रे यूज हैला, केते एनर्जी डिफरेंट प्रोसेस रे यूज हबो सेटा को जाय एनर्जी बजेट। ओके, सो एनर्जी बजेट इज गिवन बाय ए फार्मूला दैट इज E in, E in equal to E out plus EP। ओके माने टोटल एनर्जी E in कोन एनर्जी इनटेक, एनर्जी इनटेक माने एठी हमें डायरेक्टली एनर्जी इनटेक नउने, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फूड, इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट। ओके, तो हमें जति के एनर्जी इनटेक करूचे दैट इज इक्वल टू एनर्जी आउट माने एनर्जी लॉस। एनर्जी लॉस माने कोन आम जो वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शन होची सेथरे ही एनर्जी लॉस होची, एनर्जी लॉस प्लस ईपी, ईपी माने द रिटेन्ड एनर्जी, द एनर्जी रिटेन्ड एज ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ओके, तो एनर्जी रिटेन्ड फॉर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी इनटेक इज इक्वल टू ई आउट प्लस ई पी। EP is energy retained as for growth and reproduction, E out माने कोन एनर्जी लॉस। तमे पढिथिबो लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। आमे जतेले गोटे बॉडी रु फूड चेन रे पढिचो जतेले गोटे ट्रॉफिक लेवल रु आ गोटे ट्रॉफिक लेवल को एनर्जी मूव होउची, देयर इज रिडक्शन इन द एनर्जी लेवल। ओके, ट्रॉफिक लेवल 1 रे जदी एनर्जी 100 किलो कैलोरी रहिला, ट्रॉफिक लेवल 2 को केते एनर्जी जीवो 10 किलो कैलोरी। Okay, 10% only flows to the next trophic level while other energy is lost to the environment, environment को loss हे जिवो as a heat। तो एटी कहूची total heat loss माने E out
प्लस ता बॉडी रे जेतिकी रहिला टू कैरी आउट द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन प्रोसेस। तो टोटल एनर्जी जेतिकी बनूची बॉडी रे दैट इज ई इन इक्वल टू ई आउट प्लस ई पी। ओके so the given equation can be further elaborated as E out equal to E out रे कौन कौन आसुची Fe plus UE plus JE plus HE कौन एगुड़ा सब Fe फेसेस एनर्जी लॉस ओके फिकल मटेरियल जो एनर्जी लॉस होची यूरिन एनर्जी लॉस यूरिन रे जो एनर्जी लॉस होची गिल्स एक्सक्रीशन गिल जेतल एक्सक्रीशन होची सेई टाइम रे भी एनर्जी लॉस होची एंड एनर्जी लॉस एज हीट किछि किछि एनर्जी हीट है कि बाहर को बाहर जाउची तो एइरा होची डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी लॉस्ट जोटा को एनर्जी आउट इक्वल टू Fe plus UE plus ZE plus HE so total energy is equal to E out plus EP so this is just a formula to calculate how much energy is produced in the fish body and how much energy is lost and how much energy is kept for utilizing in growth and reproduction ता निजरो growth और reproduction करिया पई आउ केतिकी एनर्जी बंचुची ओके so this is the energy budget এটা ଦେଖିଦବ ନିଜେ ହେଲା ବୁଝି ନ ପାରିଲେ ମତେ ପଚାରିବ ଦେଖିଦବ ନିଜେ ଏଟା ହେଲା ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନାଲ ବାୟୋଏନର୍ଜେଟିक्ସ ଅଫ ଫିश ମାନେ କୋଉ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ରୁ କେତେ एनर्जी रिलीज होउची ଆଉ କେତେ एनर्जी वेस्ट होउची नेक्स्ट फॉर्मुलेशन ऑफ फिश फीड आमे जले फिश को फीड करेबा आमे फूड रे कोन रहिबो इंग्रेडिएंट सेटा सिलेक्शन केमती करबा ओके सिलेक्शन तो फर्स्ट स्टेप इज द सिलेक्शन ऑफ इंग्रेडिएंट फर्स्ट हमें ingredient selection so method of combine selected raw materials for fish feed ingredients to attain a well balanced nutrient state satisfying the established nutrient requirement of the species is called feed formulation okay तो हमें फर्स्ट हमें स्टडी करिया फिश रो रिक्वायरमेंट कोन अछि आ तार रिक्वायरमेंट हिसाब रे हमें गोटे फिश डाइट फॉर्मुलेट करिवा so ताकू कहा जाय fish formulation of fish feed so generally for the formulation of fish feed we have to go for step by step so first step रे हमें कोन करिवा सिलेक्शन ऑफ इंग्रेडिएंट हमें फर्स्ट सिलेक्ट करिवा गोटे पर्टिकुलर फिश को कोन इंग्रेडिएंट दरकार हमें पूर्व रु पढिले सबु फिश पाई डिफरेंट प्रोटीन कंटेंट दरकार सबु फिश पाई कार्बोहाइड्रेट कंटेंट दरकार तो हमें फर्स्ट स्टडी करिवा कि हमें को फिश ग्रो हमें फर्स्ट देखिबा हमें को फिश को ग्रो करू एक्वाकल्चर रे हमें जानि देला हमको एई फिश ग्रो करियार अछि तो सेई फिश रा हमको कार्बोहाइड्रेट केते दरकार प्रोटीन केते दरकार लिपिड केते दरकार विटामिन मिनरल्स केते दरकार ताको हमें गोटे टेबुल लागा करिवा कि एति केति अमाउंट रो दरकार देन हमें गोटे फूड को फॉर्मुलेट करिवा जो फूड रे सेई सब कंपोजिशन सेतिकी थिबो ओके तो सिलेक्शन ऑफ इंग्रेडिएंट्स फर्स्ट हमें ingredient को सिलेक्ट करिवा so the first step in selecting the ingredients is the raw material from the many source so selection of ingredients is governed by the availability of locally cost factor and nutrient content of the raw materials तो फर्स्ट हमें जो तिकी फूड मार्केट रे अवेलेबल होची तार सब न्यूट्रिएंट कंटेंट लिखाई थाए एथरे एतिक एतिक न्यूट्रिएंट अछि तो हमें देखिबा कि माने से फूड माने फूड रे फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट कंटेंट को सैटिस्फाई करथबो सब न्यूट्रिएंट प्रॉपर अमाउंट रे थिबो आउ गोटा जिंस हमें कोन देखिबा कॉस्ट फैक्टर हमकु कॉस्ट माने लो कॉस्ट रे कोटा मिलुची ओके so we have to look into two factor before selection of the food first we will see the proper nutrition proper nutrient composition of the food and we'll first see the and next we'll see the cost of the food so according to that so we must buy a food that is having low cost and have a proper nutritional balance nutrient balance okay so like this we will select the ingredient we will select the food the other important aspect of feed formulation is understanding of the proximate composition of raw material to be used
as the ingredient for the feed. एटा कोन तापर हमको देखिया को पड़िबो सेही पर्टिकुलर फिश रो इंग्रेडिएंट केते 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 ता बॉडी को दरकार, दैट इज प्रॉक्सिमेट कंपोजिशन ऑफ रॉ मटेरियल कोन कोन गोटे फूड रे केते अमाउंट रो हमें गोटे फिश को फीड करले तार प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हबो सेटा को भी हमको देखिबार अछि. ओके लाइक एनर्जी वैल्यू फीड तो दैट विल बी डिपेंड अपन हमें केति जहा फीड देबा सेही फूड ऊपर ही डिपेंड करिवो तार एनर्जी कंटेंट. ओके तो सबु फिश रो एनर्जी रिक्वायरमेंट आउ तार फूड विल बी डिफरेंट, दैट विल बी डिपेंड्स अपॉन द फिश को फिश को हमें फीड करछे तापर डिपेंड करिवो. Then we'll go for the balancing nutrients. Balancing nutrients amaro amo case रे balance diet properly आम बॉडी रो फंक्शनिंग पई हमको सबु न्यूट्रिएंट इन ए बैलेंस अमाउंट नेबा को पड़िबा से भला फिश मानन को भी दे रिक्वायर ए बैलेंस न्यूट्रिएंट. ओके तो बैलेंस न्यूट्रिएंट रे हमें कोन देखिया को पड़िबो दैट न्यूट्रिएंट मस्ट कैरी ए बैलेंस्ड प्रोटीन source, must carry a balanced carbohydrate source, fat source, mineral source and vitamin source. Okay so balanced nutrient is required for the proper growth and development of the fish. So this balancing of nutrient content is done by a formula that is known as Pearson square method. So Pearson square method through रे तांकरो माने केते balance nutrient रहिबो सेटा मप्पा जाय. Okay so this is what is the different steps for making this Pearson uh, making this Pearson square. So this is the Pearson square. Why it is known as Pearson square? Because it looks like the Pearson. Okay so first we have to see the protein source, carbohydrate source, proportion of protein source, proportion of carbohydrate source, then the desired protein content. हमको गोटे प्रोटीन कंटेंट केते दरकार गोटे फिश पई. ओके देन वी विल सी द प्रोटीन सोर्स. प्रोटीन सोर्स हमर कोन हमें को फूड टा को प्रोटीन सोर्स हिसाब रे यूज करछे कार्बोहाइड्रेट सोर्स, proportion of protein source माने जो फूड टा हमें नइचे से जो प्रोटीन टा हमें नइचे सेतरे प्रोटीन proportion केते रहइबो आ कार्बोहाइड्रेट proportion केते रहइबो गोटे मिनिट. हेलो हाँ मु करबी टिके मु क्लास रे अछि भाईना टिके परे करछि 10 मिनिट्स परे. हाँ एल ऑनलाइन क्लास चलछि गोटे. मैडम सेतिकी थाउ काली क्लास करिया. ନାଇଁ ନାଇଁ ओवरफ्लो ନାଇଁ हेलानी ଚାଲୁ कि ଚାଲୁ ଆଉ ଟିକେ ନାକୁ ଚାଲୁ କଣ ପାଇଁ तुमर आ गोटे क्लास ही हिछि सरीबनी बोधे पुणी. ठीक अछि थाउ नले. ओके मैम आज तमे गोटे काम कर एटा निजे पढ़ो न बुझी परले मते पचारिबो हला. बहुत जिंस एठी अछि तुमे निजे पढ़ी परिबो सब गुडा पढिया पॉसिबल न हला. तापरे तुमे नेक्स्ट हमें फीडिंग टेक्निक्स एटा भी निजे पढ़ी परिबो तुमे. And we'll next move to the prebiotics and probiotics. Okay feed delivery हमें feeding करिवा केमति तांको मानकु दुईटा टाइप रो feed delivery रहउची manual feeding and mechanized feeding. ता भितरे टेक्स्ट पढले तुम बुझी परिबो manual feeding कोन mechanized feeding कोन. ओके नेक्स्ट द मेजर आ गोटे माने भलो पार्ट होची प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स. एटा तमे केबे सुनि नथिबो सुनिचो प्रोबायोटिक्स कोन प्रीबायोटिक्स कोन सुनिचो केबे. ହଁ ମ୍ୟାମ୍ हाँ तो नेक्स्ट हमें काली स्टार्ट करिया प्रोबायोटिक्स प्रीबायोटिक्स. तमे एगुडा निजे पढी दियो हला. कंपैरेटिव ମ୍ୟାମ୍ ଟିକେ एनालिसिस ଆପଣ ऑफ कोन हला. हेलो ମ୍ୟାମ୍ ଟିକେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବରଟା ଆପଣଙ୍କର ସେୟାର କରନ୍ତୁ. कांटेक्ट नंबर देइथिली बा सेदिनो ମ୍ୟାମ୍ ମୁଁ ଆନନ୍ଦ लेखो ଦେଇଥିଲି 7978 7978 ଆଜ୍ଞା 189869. ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାମ୍. तुम टोटल पिला केते जॉइन करथिले बे क्लास रे
ସବୁ ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି ତ? ତମ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ତମେ ଜାଣିଛ? ମ୍ୟାଡାମ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ତ ବହୁତ ମାନେ 150 ପାଖାପାଖି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବହୁତ କମ ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା। ହଁ ଆକ୍ୱାକଲଚର ବୋରିଂ ଟପିକ ଟା, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ବୋଧେ କେହି କ୍ଲାସ। ନାଇଁ ନାଇଁ ମ୍ୟାଡାମ, ସବୁଠୁ ମାନେ ଆମକୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଭଲରେ ବୁଝି ହଉଛି। ଆଉ ଆଉ ଅଲଗା ଗୁଡା ତ ଟିକେ ଟିକେ ବେଶୀ କନଫ୍ୟୁଜନ, ଏଥିରେ ତ ମାଇନର କନଫ୍ୟୁଜନ, ମାନେ ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ, 90% ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ଆଉ 10% ଟିକେ ଟିକେ ରହୁଛି। 10% ତୁମେ ନିଜେ ପଢିଲେ ହିଁ ବୁଝିବ। ଗୋଟେ ଟିଚର କେବେ ତମକୁ 100% ତମକୁ ଦେଇପାରିବନି ଏଫର୍ଟ। ଓକେ, ଗୋଟେ ଆମେ ଟିଚର ତ ତମକୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବ, ତୁମେ ନିଜେ ନିଜେ ପଢିଲେ ହିଁ ବୁଝିବ। ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ ତମକୁ ନିଜକୁ ହିଁ ପଢିବାକୁ ପଡିବ। ବୁଝିଲ, ଲାଇନ ବାଇ ଲାଇନ ପଢିବା ପାଇଁ ଥୋଡି ନା କାହାକୁ ଟାଇମ ଅଛି ପୁରା ଲାଇନ ବାଇ ଏତେ ବଡ ନାଇଁ ନୋଟ୍ସ ନାଇଁ ଲାଇନ। ମ୍ୟାଡାମ, ଆମେ ହୁଁ, ଲାଇନ ବାଇ ଲାଇନ ଆମେ ତୁମେ ନିଜେ ଓଭରଅଲ ପଢ, ଦେଖିବ ସବୁ ବୁଝିପାରିବ। ତା ଭିତରେ ଯେତିକି ଲେଖା ହେଇଛି ସବୁ ବୁଝିପାରିବ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ତମେ ପଢିବ। ତମେ ନିଜେ ତ ନୋଟ୍ସ ବନଉଥିବ ନା? ୟେସ୍ ମ୍ୟାମ୍। ନିଜେ ନୋଟ୍ସ ବନାଅ, ଯେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ସେ ନୋଟ୍ସ ରେ ତମେ ଆଡ କରିବ। ସବୁ ଜିନିଷ ଯେତିକି ସେଠି ଅଛି ସବୁ ଜିନିଷ ନୋଟ୍ସ ବନେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, କାରଣ ଏତେ ତମେ ଜିନିଷ ଲେଖି ବି ପାରିବନି ଏକ୍ସାମ ରେ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଟଚ୍ କରିକି ଲେଖିବ, ବୁଝିହେଲା? ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍। ୟେସ୍ ମ୍ୟାମ୍, ଆମର କନସେପ୍ଟ ଟା ଗୋଟେ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲେ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆମେ ଓନ୍ ଇଏରୁ ଲେଖିବୁ। ହୁଁ, ଯେମିତିକି ଆମେ ଆଜି ଯୋଉ ଟପିକ ପଢିଲେ ମାନେ ଆଫ୍ଟର ଡେଥ ଫିସ୍ କଣ ହଉଛି, ତ ଆମେ 4ଟା ଷ୍ଟେପ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ତମେ ଲେଖିବ। ଆଫ୍ଟର ଦ ଡେଥ ଅଫ ଦ ଫିସ୍ ଦେयर ଆର୍ 4 ଷ୍ଟେଜେସ୍। ଯୋଉ 4ଟା ଷ୍ଟେଜ, ସେ ଷ୍ଟେଜ ବିଷୟରେ ସବୁଥିରୁ 5-6 ମାନେ ଗୋଟେ 5-6 ଲାଇନ ର ପାରାଗ୍ରାଫ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲେଖିବ, ବୁଝିଲା? ଏମିତି ନୁହଁ କି ତା ଭିତରେ ଯେତିକି ଅଛି ସବୁ ଲେଖି ଚାଲିବ। ସବୁ ଲେଖୁ ଲେଖୁ ତ ସେଇଥିରେ ହିଁ ଟାଇମ ପଳେଇବ। ତମ ଏ 3 ଘଣ୍ଟାରେ କେତେ ଲେଖିବ ଏକ୍ସାମ ରେ? ୟେସ୍ ତ ସେଇଟା ମ୍ୟାମ୍ ୟେସ୍। ତମକୁ ନିଜେ ବୁଝିବାର ଅଛି, କୋଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଢିଲେ ତମକୁ କେତେ ଲେଖିବାର ଅଛି। ଏମିତି ନୁହଁ କି ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖୁଥିବ 2 ଘଣ୍ଟା ପଳେଇବ, ଆହୁରି 10ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିବ ଲେଖିବା ପାଇଁ। ୟେସ୍ ମ୍ୟାମ୍ ୟେସ୍ ମ୍ୟାମ୍। ତ ନୋଟ୍ସ ମ୍ୟାମ୍ ତୁମେ ଏଥିରେ ଏମିତି ବନା। ଆମର ତ ମ୍ୟାମ୍ ଆମର ତ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାୟ ପଡିବନି, ବୋଧେ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ପଡିବ ମତେ ନାଇଁ, ମୁଁ ଲାଗୁଛି ତ ନା? ତୁମ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପାଟର୍ନ ମତେ ଜଣା ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ନାଇଁ ଇଗ୍ନୋ କ୍ଲାସ ନଉଛି। ନାଇଁ ମ୍ୟାଡାମ, ଅଲଗା ଆମେ ପିଜି ଇଗ୍ନୋରେ କରିଥିଲୁ ଯୋଉ ଗୁଡାକ, ସେ ମାନେ ଏମିତି 20x5, 5ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ 20 ମାର୍କିଆ ଦବ 100। ସେମିତି ଆମର ଏଇଟା ପଡିବ କି ପାଟର୍ନ କଣ? ଆର ତ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏଇଟା ତୁମର ମୁଁ ଯୋଉ ଭଳିଆ ମାନେ ତମ ମେଟେରିଆଲ ଅଛି, ମାନେ ମୁଁ ଯାହା ଫିଲ୍ କରୁଛି ମେଟେରିଆଲ ଯେମିତି ଅଛି, ବୋଧେ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହିଁ ଆସେ ସବୁ। ତୁମେ ପଚାରିଦିବ, ମାନେ ଯୋଉ ସାରଙ୍କୁ ପଚାରିଦବ। ତମ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପାଟର୍ନ ତମର ୱେବସାଇଟ ରେ ବି ଥିବ ନା କୋଶ୍ଚିନ୍ ପାଟର୍ନ? ନାଇଁ ମ୍ୟାଡାମ, ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ପାଇଁ ବା ଇଗ୍ନୋରେ ଜୁଲୋଜି ନଥିଲା ଆଗରୁ। ଏଇ ବର୍ଷ ହିଁ ମାନେ ବର୍ଷେ ହେଲା ହିଁ ମାନେ ଖୋଲା ହେଇଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ବ୍ୟାଚ୍ ଏକ୍ସାମ ଦବୁ। ଓହୋ, ସାରଙ୍କୁ ତାହେଲେ ପଚାରିବ, ସାର୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପାଟର୍ନ କହିପାରିବେ ଭଲସେ, ମତେ ଆଇଡିଆ ନାହିଁ। ଫିଜିକ୍ସ ଆଉ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଆଗଥର ଚାଲିଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ଆସିଥିଲା। ତାହେଲେ ସେମିତି ହିଁ ଆସିବ, ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହିଁ ଆସିବ ବୋଧେ। ହେଲେ ବି ତୁମେ ଆଉଥରେ କନଫର୍ମ ହେଇଯାଅ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ପାଟର୍ନ ବିଷୟରେ ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ସେ ଯୋଉ ତୁମ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ନା, ଡାଇରେକ୍ଟର ସାର୍ ଯିଏ। ଆମେ ମ୍ୟାଡାମ ନହେଲେ ଅଧା ଦବୁ, ଆଉ ଅଧା ଦବୁନୁ, ନେକ୍ସଟ 6 ମନ୍ଥ ପରେ ଦେଇଦବୁ। ପାଟର୍ନ ଟା ଜାଣିଲେ ସେ ଅନୁସାରେ ପ୍ରିପେୟାର ହବୁ। ଅଧା ଦବ, ଅଧା ଦବନି ମାନେ? ଆମର ବର୍ଷକୁ 2 ଟାଇମ୍ସ ଆମେ ଏକ୍ସାମ ଦେଇପାରିବୁ। ଏବେ ଡିସେମ୍ବରରେ ଦବୁ, ନାହିଁ ତ ଡିସେମ୍ବରରେ ଯଦି କିଛି ଛାଡିଲୁ ନେକ୍ସଟ ଜୁନରେ ଦେଇପାରିବୁ। ଓ ଆଚ୍ଛା ଜୁନ ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ତୁମେ ଆମର ମନ ଇଚ୍ଛା ଏକ୍ସାମ ଦବ ତୁମ ହିସାବରେ? ହଁ ମ୍ୟାଡାମ, ଏମିତି ହଉଛି ତ ମ୍ୟାଡାମ, କିନ୍ତୁ ନାଇଁ, ମତେ ତ ଇଗ୍ନୋ ବିଷୟରେ ଆଇଡିଆ ନାହିଁ, ମୁଁ ଜାଣିନି। ତ ବେଟର ତୁମେ ସାରଙ୍କୁ, ନାଇଁ ନାଇଁ କାହିଁକି ସେମିତି କରିବ? ପଢିଛ ଯଦି ଦେଇଦବ ଏକ୍ସାମ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ପାଟର୍ନ ଜଣାଥିବ ତମର, ଆଇଦର ୱେବସାଇଟ ରେ ଥିବ, ନହେଲେ ତମେ ସାରଙ୍କୁ ପଚାରିବ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପାଟର୍ନ ତୁମର, ହେଲା? ୟେସ୍ ମ୍ୟାମ୍। ହୁଁ, ଠିକ ଅଛି। ଯାହା ଡାଉଟ ହବ ଆମେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବୁ। ହଁ, ମୁଁ ପଚାରିବାକୁ ମନା କରୁଛି? ମତେ କିଏ ଗୋଟେ ମେସେଜ କରିଥିଲା କି ତୁମ ଭିତରୁ? ନା ମୁଁ ତ ଗୋଟେ କରିନି। ହ୍ୱାଟସଆପ ରେ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଆସିଥିଲା କାହାର, ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି, ମୁଁ ଆଉ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇନି। ମ୍ୟାଡାମ, ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ୱାର୍କ ପ୍ଲେସ୍ କୋଉଠି? ମୁଁ ରାଉରକେଲାରେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଓକେ ମ୍ୟାମ୍। ହୁଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମ୍ୟାମ, ଠିକ ଯେତେ ଅଛି। ସବୁ କ୍ଲାସ ହେଇଛି, ଏଇ କ୍ଲାସ ଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। କଣ ଯେତେ ସବୁ ଯେତେ ସବୁ କ୍ଲାସ ହେଇଥିଲା ଆଜି ଯାଏଁ, ଏଇ କ୍ଲାସ ଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ମ୍ୟାମ। ଭଲସେ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ଆଜ୍ଞା ନା ଆଜିର ତ ପେପର, ମ୍ୟାଡାମ ଏଇ ପେପର ଟା? ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲାସ୍। ଆପଣଙ୍କ କ୍ଲାସ ମ୍ୟାମ। ମତେ ଇମ୍ପ୍ରେସ କରିବାକୁ କହୁଛ ନା କି? ମ୍ୟାଡାମ, ପ୍ରାୟ ଆରେ ଠିକ ଆପଣ ଅଛି, ରଖ। ଆପଣ ମ୍ୟାଡାମ ଯେତିକି କଭର କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ହିଁ ଆମର ହେଇଯିବ, ଆମକୁ ଲାଗୁଛି, କନଫିଡେନ୍ସ ପାଉଛି।
अच्छा अच्छा ठीक अछि चलो बहुत टाइम हे गलानी काली क्लास नेबा हला ओके थैंक यू मैम थैंक यू थैंक थैंक यू यू मैम, गुड नाइट मैम। गुड नाइट।